सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं who is currently a senior lecturer at of economics at University of Bristol, if I'm not wrong. इससे पहले he was at Queen Mary University of London. वो प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान में भी काम कर चुके हैं. उनकी PhD है in monetary economics from the University of Bristol. मेरे साथ आज मौजूद हैं अहमद जमाल पीरज़ादा साहब. Sir, thank you so much for being part of the show. Thanks a lot for having me with you. मैं थोड़ा सा क्विकली जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है और बार बार क्वेश्चन आता है कि हमारा डेट सस्टेनेबल है कि नहीं है. हमारे IPPs बहुत ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में पैसे ले रहे हैं. एंड इट सीम्स लाइक फॉर समवन जो बाहर से इसको देख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक अजीब से स्पायरल में है एंड इट्स ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी कि ये इससे बाहर निकल सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिशियंस हमें जो भी बोलें, मीडिया हमें जो भी बोले. रियलिस्टिकली इफ यू कैन पेंट अ पिक्चर जस्ट एज अ स्टार्टर कि क्या इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तानी इकोनॉमी की. Thank you for the question. Yeah, let me start with the external debt. I think that's very important. अगर आप अभी देखो कि आपने external debt अगले साल में अगले 12 महीने में कितना देना है, तो that's around 26 billion. और 26 बिलियन ये बनता है तकरीबन 35 से 40% आपकी जो डॉलर इनकम है, जो कि पाकिस्तान की केस में ज़्यादातर आप इसको एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस ही समझ लें तकरीबन, उसका ये 35 से 40% बनता है. और दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. इसके अलावा पाकिस्तान अगर आप बाकियों से कंपेयर करें तो देयर इज ओनली अ हैंडफुल ऑफ वेरी स्मॉल इकोनॉमीज, सम ऑफ देम इन अफ्रीका, सम ऑफ देम आर आइलैंडिक इकोनॉमीज, सो यू कांट रियली इवन नेम देम प्रॉपर्ली, व्हिच प्रॉब्ली हैव अ बिट ऑफ अ हायर रेशियो. अगर आप मेजर इकोनॉमीज में देखें तो पाकिस्तान एक्चुअली स्टैंड्स आउट अमंगस्ट द लीग ऑफ नेशंस. ये जो आपने 40% और ये आपका, सॉरी मैं वो काट रहा हूँ आपको, मुझे बस ये बता दीजिएगा कि ये 40% आपकी GDP का है या ये 40% आपका जो एक्सपोर्ट, लाइक जो टोटल डॉलर अर्निंग है आपकी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस मिला के? ये आपकी डॉलर इनकम, डॉलर जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस की शक्ल में, उसका 40% आपने अगले 12 महीने में देना है. और ये सिचुएशन कोई नई नहीं है. इस सिचुएशन में आप पिछले 2 साल से फंसे हुए हैं. दिस नंबर हैज बीन फ्लोटिंग अराउंड 20 बिलियन एंड इट वेंट ऑल द वे अप टू 25 बिलियन. 2017-16 में this was a lot lower, but the whole thing was kind of building up and then it has kind of peaked as of today. और ये अब आपको मैनेज करना है. और अब आप इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? इसमें मैनेज करने का जो एक तरीका है वो ये है कि आप अपनी इकॉनमी को इतना स्लो कर दें कि आप सरप्लसेस जनरेट करें. सरप्लसेस से मुराद यहाँ पे है कि जो आपकी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस से आपकी इनकम है, दैट्स मोर देन व्हाट यू आर स्पेंडिंग ऑन एक्सपोर्ट्स. तो करंटली पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ओवर अ ईयर आप यू आर बेसिकली जनरेटिंग अ सरप्लस डिफाइंड एज सच ऑफ अराउंड 5 बिलियन, जो कि आपका सारा का सारा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं एक्सटर्नल लोन के ऊपर, उसमें चला जाता है. तो दैट्स मेंटेनिंग एन ऑरा ऑफ स्टेबिलिटी, जो आपके एक्सचेंज रेट पे प्रेशर नहीं आ रहा और सारा कुछ. दैट्स वेरी मच ड्रिवन बाय द स्लो डाउन विच यू हैव बेसिकली इंटेंशनली कॉस्ट इन द इकोनॉमी. मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन से और फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन से आपने उसको सस्टेन किया हुआ है. But the problem is कि जो for example पिछले 2 साल में भी डिस्कस हो रहा था, and then few people talked about this in public as well, ministers for example, कि इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और ये खुद ही चला जाएगा क्योंकि हम फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनसे हम हर साल 2 साल 3 साल का रूल ओवर कराते रहेंगे, and that's fine, we can keep it going until this kind of goes away. That's very wishful thinking that will go away because you have to explain कि how will it go away. अब पिछले 2 साल में तो we are kind of rolling it over. और अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे करंट हैं उनकी स्टेटमेंट सुनी है कि अब वो जो किकिंग द कैन डाउन द रोड वाला टाइम, इवन दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन मूविंग इन द फ्यूचर. तो व्हाट्स द वे आउट ऑफ इट? आइदर आप इसको इसी तरह चलाते रहें और प्रिटेंड करें कि कभी ना कभी हमें कोई ना कोई बेल आउट करता जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी है कि शायद होता रहे. कोई भी नहीं चाहता आप उनके डेट पे डिफॉल्ट करें. तो मे बी पुश कम्स टू शव, दे विल कीप ऑन रोलिंग ओवर, बट दे विल ओनली रोल ओवर फॉर अनदर ईयर और मैक्सिमम अनदर 2 years, व्हिच इज व्हाट वी हैव सीन हैपनिंग इन द केस ऑफ पाकिस्तान. लेकिन इसका फिर मतलब ये भी होगा कि आप अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल इसी तरह इसको स्लो डाउन और चोक करके रखें ताकि आप जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनको आप सर्व कर सकें. पिछले साल में वी वर अ बिट लकी एज वेल कि आपकी एक्सपोर्ट इनकम है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, रेमिटेंसेस भी इंक्रीज होगी. एक्सपोर्ट्स वाज वेरी मच ड्रिवन बाय जो इंडिया ने अपने फूड एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया, उसकी वजह से वी एंडेड अप गेटिंग आई थिंक $2 billion अ बिट मोर. तो उससे ब्रीदिंग स्पेस मिली, बट दैट्स अ ब्रीदिंग स्पेस व्हिच very much depends on what India decides to do going forward in terms of their export ban on agricultural products, right? So you are getting a bit of a room there, so you were a bit lucky, but that's only luck. You don't make policy based on getting lucky every single time when you think about the future, right? So that's where you stand in terms of your external debt.
और domestic debt, again, इसके ऊपर Murtaza Sayyed, he wrote a very good article in FT, also wrote a very good thread. So he's also talked about the domestic debt. And once again, if you look at the matrices there, वहाँ पे भी again, अगर आप बाकी मुल्कों से compare करें तो पाकिस्तान stands out, जिसका domestic debt burden as a proportion of their revenue is probably one of the highest, if not the highest. So these are the problems where you're stuck. We can keep on taking this forward. Again, we talk about default. Again, it's very important to keep in mind, default is a choice. आप चाहो तो डिफॉल्ट ना करो, राइट? आपने बैंक का लोन वापस करना है तो आप अगर चाहो तो आप डिफॉल्ट ना करो, आप अपना खाना कम कर दो, आप अपनी एजुकेशन स्पेंडिंग कम कर दो, आप अपनी बाकी एक्टिविटीज को कम कर दो, आप बाहर जाना ही बस कर दो, तो यू हैव इनफ इनकम टू मे बी सर्विस पार्ट ऑफ योर डेट। और वो बैंकर भी नहीं चाहता आप उसके लोन पे डिफॉल्ट करें, तो वो भी कुछ ना कुछ लोन ओवर कर देगा, कुछ ना कुछ आप अपना पेट बांध के उससे सर्विस करते रहेंगे। लेकिन अनलेस योर इनकम गेट्स आपकी इनकम इंक्रीज करे, वन, or you end up with some kind of an agreement where let's say the banker or the loan officer वो आपको कोई डील दे जो आपका एक्सटेंड कर दे मैच्योरिटी प्रोफाइल, और आपकी जो पेमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो 26 बिलियन से लेट्स से कम हो के 15-12 बिलियन के अराउंड आ जाएं, which is something which is still pretty high but let's say better than what we have at the moment, then you can kind of go forward. नहीं तो आपको इसी तरह पेट पे पत्थर बांध के चलना पड़ेगा और हमेशा दुआ करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लक आपके फेवर में प्ले करे। अच्छा, इसके ऊपर आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट यू जस्ट शेयर्ड। पहला तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने रोल ओवर की बात की, आपने 26 बिलियन जो स्टार्ट में बोला था, डू यू एक्सपेक्ट कि वो सारा का सारा वापस जाना लाजमी है, या डू यू एक्सपेक्ट कि उसमें से सर्टेन अमाउंट जो है वो रोल ओवर हो जाएगा? जो कि पिछले सालों में हम कॉन्स्टेंटली देखते आए थे कि हर साल का एक नंबर होता था आखिर में कि लेट्स से हमने 15-20 बिलियन देना है, लेकिन एक्चुअल में हम उसमें से शायद 6-8 बिलियन दे रहे होते थे, बाकी सारा का सारा वन वे और द अदर रोल ओवर हो जाता था, या आप एक जगह से लेके आप दूसरी जगह पे लौटा देते थे। सो हाउ मच ऑफ दैट डू यू एक्सपेक्ट कि वो रोल ओवर हो जाएगा? एंड दूसरा, जब ये रोल ओवर की बात होती है तो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट दैट मींस, राइट? डज द रोल ओवर मीन कि यार अच्छा मैंने लेट्स से 1 बिलियन देना था, अब मुझे बस एक पॉज आया हुआ है और मैं अगले साल दूंगा, या डज दैट बेसिकली मीन कि अच्छा आप वो नहीं दे रहे इस साल, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है इस साल का वो भी काउंट हो रहा है और फिर अगले साल का वो भी काउंट हो रहा है? और इसी के साथ तीसरा टाइट क्वेश्चन ये है कि कोविड के टाइम के ऊपर हमने सुना था कि कुछ अरसे के लिए पॉज लग गया था डेट के ऊपर, एंड वी गॉट सम स्पेस, जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट जो है वो जो कहती है कि हमने बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ दिखाई, उसमें एक मेजर रीज़न ये भी था कि यू डिड नॉट हैव दोज पेमेंट्स, अदरवाइज मे बी वी वुड हैव बीन सॉर्ट ऑफ उस टाइम पे भी हमारे हालात प्रॉब्लमेटिक होते। सो जब उस टाइम के ऊपर आपका पॉज लगा हुआ था, वर वी स्टिल गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट पॉज, एंड डू यू थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई सडनली एक आइसबर्ग की तरह आके हमें लगा है वो इसी वजह से बिकॉज कोविड के टाइम पे जो रिलीफ मिला था हमने उसके लिए प्रोजेक्ट नहीं किया, कि जब उस रिलीफ ने हटना है तो उसमें फिर जो इतना मैसिव आपकी रीपेमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी, उसके लिए हम किस तरह डील करेंगे? आई थिंक अगर मैं आपका आखिरी क्वेश्चन पहले एड्रेस कर दूं, आई थिंक कोविड वाला जो आपको पॉइंट, आपके जो डेट रीपेमेंट्स है उसमें कमी तो डेफिनेटली आई थी एंड वाज वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द नंबर्स आपके रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए थे। तो moving into 2022, which is a year after COVID, the reserve buffers that you had were quite significant. So जो room create हुआ था, it wasn't that you ended up wasting it immediately at the time of COVID. You actually ended up building buffers based on that. Where things really went wrong was when you ended up on the fiscal stimulus side moving into the mid of 2022, and that going forward. I think that's when things got really bad in terms of how much of a control we had over the situation. The other thing which you have to keep in mind is आपका debt burden 26 billion है, it's actually building up, right? It's not कि वो आज create हो रहा है. This is past debt which is maturing. Right. So this is the debt which, let's say, the government was taking between 2018 to 2022. This was also the debt that had been taken in the period before 2018, for example, CPEC and all those fundings that came in. And this actually also included some of the debt जो 2001 में आपका restructure हुआ था. So let's not forget कि जो आज हमारी situation है, if you only focus on the aggregate numbers, this is very similar to the situation we had in 1999 or 1998, moving all the way into 2001. तो जो आपकी जो debt servicing थी, मैं जो कह रहा था 35 से 40% आपकी जो dollar income है that goes to, let's say, servicing your debt, it was almost a similar ratio back then as well. तो लेकिन अगेन यू गॉट अ बिट लकी, जो 2001 में आपका 9/11 हुआ एंड देन वी एंडेड अप जॉइनिंग द यूएस वॉर इन अफगानिस्तान, उसकी वजह से वी गॉट अ ब्लैंकेट रिलीफ, और जो आपकी सारी डेट सर्विसिंग थी मोस्टली ड्यू टू पेरिस क्लब एट द टाइम, वो दैट गॉट एक्सटेंडेड बाय अबाउट 15 years or so एट द टाइम.
So that was also coming to maturity, moving into the period that we are currently in. So it was a lot of debt that was being taken at the time, and also a lot of the debt that was being taken in the past, जो कि at the same time फिर वो आपका build up, उसकी जो maturity है, that ended up kind of coming together at a time जब आपका ये problem create हो रहा है. And it was also in a way it was we were lucky, but we were also unlucky कि जो आपकी global monetary policy है, that ended up being very different to what it was, let's say, over the last 10 years. US सारे आपके जो global central banks हैं, उन्होंने अपने interest rates बढ़ाना शुरू कर दिए. Investors were taking money out of emerging economies. COVID also spread a lot of panic. So all of those factors kind of worked in together, including the debt you had taken in the past, to make the situation really bad for us. एक और इसमें जो चीज़ आ जाती है, जो कि which makes Pakistan quite different and also brings in the geopolitical side of it, कि आपका जो debt है, it's not market debt. It's not कि आप bond market में गए और आपने वहाँ से ढेर सारा debt उठा दिया, या आपके banks ने बाकी global banks से borrow किया और उसको फिर आपने lend किया. I'm not saying that that's less harmful, but the point is, it's not that the investor or the market is lending to you depending or based on their projections about your future. A lot of this debt is very much tied to geopolitics. आपको वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे रहा है, आपको IMF भी पैसे दे रहा है, आपको चाइना भी दे रहा है, आपको GCC कंट्रीज भी दे रही हैं. GCC कंट्रीज आपको किस तरह दे रहे हैं पैसे? वो आपके डिपॉजिट रखवा रहे हैं स्टेट बैंक में और बाकी इंस्टीट्यूशंस में, राइट? चाइना के साथ आपने स्वैप लाइंस उन अरेंजमेंट में चले गए और वो आपने मैक्स आउट कर दी है और आप उसकी फिर मैक्सिमम कैपेसिटी भी आप बढ़ाने की बात कर रहे हो. तो a lot of the funding, a lot of the debt that we have taken, that's very much tied to geopolitical dynamics that going on, that are or that were going on at the time, right? Right. Those geopolitical rents were actually very important. At the same time, together with IMF, that's where I criticize the lending institutions, क्योंकि वो आपको they provide you a bit of a risk insurance, but then that also means कि आप जहाँ से भी आपका बस चलते हैं, आप वहाँ पे जाके लोन्स उठाते फिरो, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि IMF ने आपका रिस्क जो है वो अंडरराइट किया हुआ है. लेकिन इन इफेक्ट आपने कभी ना कभी तो वो पैसे देने हैं, and whenever the time comes, and then if you don't have IMF in place, then everyone panics and then there's a crisis. So the key thing is, a lot of the lending a lot of the debt that we accumulated over this time period, let's say post 2001, जब आपको restructuring मिली थी, it was very much the debt which was very closely linked with the geopolitics that was shaping the world, rather than what the investors were thinking about Pakistan at the time. राइट, बट इसी में मेरा सवाल बेसिकली ये है कि जो जिस तरह हमने बात की ना कि अगर लेट्स से 26 बिलियन हमारा डेट है और उसमें से 13 बिलियन अगर रोल ओवर हो जाता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल कोई रिलीफ ले भी आते हैं, हम रोल ओवर्स निकाल लेते हैं, हम कोई रिस्ट्रक्चरिंग ले आते हैं, व्हाट डज दैट मीन इन टर्म्स ऑफ द टोटल लायबिलिटी? कि अगर लेट्स से 2-3 साल हमें थियोरेटिकली तो कुछ देना नहीं पड़ रहा ना, 13 अरब जो है वो रोल ओवर हो गया, वो अगले साल चला गया, वो अगले साल चला गया, बट क्या लेट्स से 3 साल बाद फिर वो 13 अरब ही होगा, या वो 13 अरब प्लस लेट्स से इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन व्हाटएवर जो आपकी अमाउंट पिछले 2 सालों की है वो होगी? व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज जहाँ पर वो रिलीफ आती है वहाँ पर आपका टोटल बिल भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर अनलेस यू डू सम अंडरलाइंग चेंजेस जिसमें आप कहते हैं कि यार मैं कहीं से एक्सपोर्ट्स बढ़ाऊं, मैं कहीं से प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं, अदरवाइज तो यू गोना गेट स्टक अगेन एंड प्रोबब्ली वर्स ऑफ इवन देन राइट नाउ. I think over the long term, वो तो आपको reforms तो करनी है. There's no way out of this कि आप reforms ना करें, which we'll talk about later, or you just kind of wish it away. लेकिन at the same time, you do need a breathing space, right? If you're stuck in a mess, और आपके दरवाजे पे हर शाम को let's say वही आपका बैंकर आके आपसे पैसे मांग रहा है, it's a very different situation, right? You're in a very different mindset in terms of what you want to do, what your priorities are. Now, what about restructuring? Isme, the outcome really depends on the kind of negotiations you have. One is a haircut. Jisme, let's say you say, acha yaar, mera total debt, let's say it's 100 billion. We are going to bring it down to, let's say, 90 billion, 80 billion, something like that. The other is more in terms of NPV reduction. कि वो value तो उसकी कम नहीं हो रही in terms of जो आपने the amount you need to give. आप let's say 100 billion आपने देने, आप दोगे 100 भी नहीं दोगे, लेकिन you spread it over a longer term, तो उसकी जो present value है वो कम हो जाएगी. इसको वो net present value भी कहते हैं. तो in NPV terms you end up getting some kind of debt relief. अब पाकिस्तान के केस में if you look at the debt to GDP ratio for external debt, it's high, but it's not very high.
लेकिन द डेट सर्विसिंग जो 26 बिलियन और वो उसकी जो रेशो बनती है आपकी डॉलर इनकम के साथ, दैट्स वेरी हाई. सो अगर आपका डेट जो है वो उसका टाइम फ्रेम एक्सटेंड हो जाता है, सो दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस वेयर आपके फाइनेंस मिनिस्टर को या आपकी जो इकोनॉमिक टीम है उसको ये नहीं सोचना कि अच्छा यार अब अगली फ्लाइट मैंने किस मुल्क की पकड़नी है, चेक करो कि किसका लोन मैच्योर हो रहा है, लेट्स से नेक्स्ट मंथ. सो you need to come out of that mindset before you start thinking about anything else. So that's why that's important. But then again, जो उसका end outcome होगा, it will very much depend on the negotiations. Pakistan, fortunately, unfortunately, does not fall in the category of low-income countries, so it makes the process even more tricky. Because then, when you go and ask for restructuring, It does not come in low-income countries. it does not, and therefore it does not qualify. There is a certain category when you think about that restructuring, which brings Pakistan out of the fold where you don't have to do, let's say, domestic debt restructuring. Okay. अब जो श्रीलंका, Zambia और जो Ghana का, the one of the key difference, I think, if I don't get this wrong, I think Zambia was probably in that category. So Zambia did not have to do domestic debt restructuring. Okay. So they only had to work out an arrangement where they end up restructuring their external debt. What does that But mean? I think because when we don't fall in the low income category, what does that mean in the context of debt restructuring जो आपने local के साथ connect किया? Yeah, when you go to the IMF or when you default, let's say, yeah, you go to the IMF and say कि हमें restructuring करनी है. So उसमें क्या उस ambit में क्या आएगा? क्या उसमें सिर्फ external debt आएगा या उसमें domestic debt भी आएगा? So the answer to this question really depends on which income group you fall into as per certain classification. I think IMF or World Bank, one of, or maybe both of them together decide who falls in which classification. So I think Pakistan does not fall in the lower classification, which makes things a bit more easier. Pakistan falls in the upper classification, which means कि अगर हम टेबल पे जाएंगे तो we will be asked to not just restructure or against the external debt की restructuring के against, they'll also push us to also go and get the local debt restructured. Again, it's not a very straightforward process. Pakistan, जो हमारे banks का exposure है to government, you can't just go and say, अच्छा आप इतने % से कट कर दो तो पूरा का पूरा banking system आप पे तबाह हो जाएगा. Right. So there's a lot of back and forth in terms of what is optimal, because you don't want to create a second crisis 2 years down the line. Just may you have to go back to the negotiation table and then tell everyone to let's do it again, right? You don't want that to happen. You want to come up with a framework which will sort things out, and you won't be coming back to them asking for a debt relief in the next, possibly ever again. There's a lot of uncertainty there. I understand. Where do you think this is going, though, practically speaking? Because abhi finance minister was in China. He was trying to get relief on maybe 15-16 billion of the Chinese IPP loans, if I'm not wrong. और उसमें मेरी confusion ये आ रही थी कि अगर हमारा debt का problem है, तो why aren't we talking to everyone across the board, right? Why aren't we getting the World Banks and the IMFs and the Paris Club in and saying, listen, like overall जो हमारा debt है, let's rethink how we can potentially return that. Why are we specifically targeting China here? And दूसरा, again, इसके साथ मैं try करूँगा कि realistically speaking, पाकिस्तान का जो local debt है, वो does not seem even close to being sustainable. मैं नहीं कह रहा कि उसमें चले आप haircuts ले लें, but it has to be redesigned in one way or the other. बिकॉज इस वक्त तो गवर्नमेंट का सारा रेवेन्यू उधर जा रहा है और वो एवर इंक्रीजिंग एक उसके अंदर है, जिसमें एंड लास्ट में जो ये लोकल डेट के साथ कनेक्ट करके एक सवाल करूंगा कि देन पोटेंशियली इफ वी डोंट गो टुवर्ड्स डिफॉल्ट, what's the solution there? Like, are we looking at कि जी we can potentially inflate away, क्योंकि ठीक है PKR का डेट है हमारा है, हम उसको we can inflate away the debt. अदरवाइज तो फिर यानी कि 2 ऑप्शन है ना, या तो आप डिफॉल्ट करेंगे, आप कहेंगे ये अनसस्टेनेबल था, वापस कर ही नहीं सकते, कट्स लें, लेकिन अगर उसमें आपका बैंकिंग सेक्टर तबाह होता है तो फिर ऑल्टरनेट ये है कि यार हम खामोशी तुर्की स्टाइल 30-40% इन्फ्लेशन बर्दाश्त करें और एकदम से एक जंप लेके विल इन्फ्लेट दैट अवे. व्हाट डू यू थिंक practically speaking? Yeah, I think it's inflate. It sounds as if this can work, but then if everyone knows this is what the government is going to do, then it won't work, right? अगर बैंकर्स को पता है कि इन्फ्लेशन लेट्स से गवर्नमेंट जो है उसको 10% से 11% से लेट्स से 20-30-40% पे ले जाएगी, राइट? जब वो आपको डेट देंगे, जब आपने लेट्स से अपने बॉन्ड्स को रिन्यू कराना है या नए इशू करने हैं, आपको वो 10% पे इशू करेंगे.
they are forward looking, so they'll see what's going to happen. So you can do it by surprise. No one knew it happened. Fair enough. But if you think of this as a strategy, it's not going to work out, because then everyone will know that's what you're planning, and they'll take that into account in their own pricing decisions. So there's a limitation there. The alternate is that it's not just about default or inflate. You can also squeeze yourself so much that over a very long period of time, you chip it away, right? It's all about, yaar, aap apne aap ko, you choke the economy. Let's say it that way. So aap itna choke karo. In this case, गवर्नमेंट केस में ये होगा कि वो बेसिकली गवर्नमेंट बहुत सारे इदारे ऑफलोड कर देगी, प्राइवेटाइज कर देगी, अपना साइज कट करना शुरू कर देगी, बेसिकली फिस्कल सरप्लस की तरफ जाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? फिस्कल सरप्लस रन करोगे, then you keep the monetary policy tight enough. Essentially, the idea is that you keep your imports much lower than your exports and remittances. And they're already very low. जो मैंने शुरू में बात की कि they're already low by about 5 billion or so over अगर आप साल की बुनियाद पे देखो. But then you have to cut them or reduce them even further. You have to increase the gap between exports, remittances and imports even further. कि आपका current account surplus इतना ज़्यादा हो जाए कि then you can also start paying back the principal, right? अभी तो आप सिर्फ interest pay कर रहे हो. लेकिन if you want to chip it away, then you also have to start paying the principal. So तभी मैं कह रहा था कि default is a choice. अगर गवर्नमेंट चाहे तो डिफॉल्ट करे, अगर गवर्नमेंट चाहे कि नहीं ये कॉस्ट हम देने को तैयार हैं तो ना डिफॉल्ट करे, देन यू कैन चोक इट टू एन एक्सटेंट, जिस तरह ग्रीस ने किया कि अल्टीमेटली एवरीथिंग काइंड ऑफ वर्क्स आउट, राइट? एवरीवन इज मिजरेबल, बट इफ यू आर विलिंग टू पे द कॉस्ट, फेयर इनफ. द पॉइंट एज एन इकोनॉमिस्ट इज मोर अलोंग द लाइंस ऑफ, इज इट वर्थ इट? वेयर इज इट दैट यू से दैट मे बी डिफॉल्ट इज अ बेटर ऑप्शन देन चोकिंग द इकोनॉमी टू एन एक्सटेंट where really people are killing each other on the street, right? Or killing themselves, right? Committing suicides. So they just, people kind of get offended by the term default, but it's a very economic question. Aapko wara kya khata hai? Which of the two options is better? At some point, default, and economists are very open about this. Rogoff, he's a big shot in this field. He very explicitly says there are often conditions where the country is actually better off defaulting than otherwise, than adopting the traditional policies, which mean very large primary surpluses, very stringent monetary policy to choke the economy enough to balance the books at the end of the day over a certain period of time, right? So the question is always, have we reached that point or not? Now, Rogoff, if you look at him and many of the other people who talk about this, they obviously acknowledge that the governments are generally reluctant, which is coming back to your question earlier, the government, then why do they forget default? वो restructuring की तरफ भी क्यों नहीं जाते? Restructuring is effectively default anyways. There's a very big political cost to it, right? If the political environment is not very stable, irrespective of who's ruling, you don't want to risk, let's say, getting a tag कि आपके टाइम में तो मुल्क का दिवालिया हो गया, right? So that's the language we'll use, or let's say anyone who's on the other side of the fence, no matter which government, will use to get the brownie points, right? So no one wants that tag, yaar, humne to mulk ka divalia kar diya, right? So that's one reason. The other reason is it's very costly as well. Agar aap restructuring ki taraf jate ho, or IMF and all these people, they also tell you, pehle to IMF and China, all these people, they are fighting between themselves. Lekin agar aap usko chhod bhi do side pe, agar wo aate hain aur kehte hain aap apne banks ko restructure karo, then again, there's a question of conflict of interest in terms of who's making the decision for the country at the point in time, right? Irrespective of the personalities. What does that mean? For bankers, kya wo chahenge ki aapka debt restructure ho, and the hold they have, let's say, or the influence they have on the policy making circles, they'll obviously not want the government or the country to go, or the policy to go in a direction where they end up at a point where domestic debt restructuring becomes part of the conversation at a higher level, right? So a lot of that is in play. Then again, IMF is also IMF also deserves a lot of criticism in the sense, wo bhi apni books ko, numbers ko, bas they kind of come up with numbers to make things look as if they're going to work out fine. Agar aap IMF ki pichhe 2 saal, 3 saal ki projections dekho ki kitne paise bahar se aa rahe hain aur kitna hum current account deficit run kar sakenge, they have been off the chart. Systematically, not a one-off error, but systematically, in every IMF staff level agreement document that comes out, they have been systematically over projecting the money that we are going to get
from the rest of the world, which will then make everything add up. आप current account deficit भी 6 billion, 7 billion, 8 billion का run करोगे, growth भी 5% पे चली जाएगी 2 साल में, and everything is going to work out very fine. और अगर 5% पे growth चली जाती है तो domestic debt भी as a proportion of GDP will become, everything works out very fine. It's beautiful. Right. But to get to that beautiful outcome, you have to make this very, to an extent, a misleading assumption, to use the term, where you keep pretending that the money is just going to come in. So there's also them, or the role of IMF, that's also very questionable, where they don't fully appreciate what the cost of a traditional program is going to be, thus forcing the government and the civil society in the country to think about what is the right way to go forward in terms of whether to consider restructuring or follow the path which IMF says is going to work out towards a very reasonable outcome in 2 years' time, right? So they also probably deserve a lot of criticism or questions which they need to answer in that respect. Makes sense. I want to get a few things, like कुछ understandings मैं for the consumer समझना चाहता हूँ. पहला ये, at this point in time जहाँ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, हमें डिफॉल्ट के बारे में तो बड़ा डराया जाता है, क्या डिफॉल्ट हो गया तो बाहर से पैसा ना रुक जाएगा कुछ अरसे के लिए, पोटेंशियली इंपोर्ट्स मैसिवली रुक जाएं. हमने श्रीलंका के हालात देखे और जगहों के हालात देखे कि डिफॉल्ट होता है तो कुछ अरसे के लिए आपको अपनी इकोनॉमी को रोकना पड़ता है और आपको रीडिज़ाइन करना पड़ता है. बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग जहाँ पर हम आज खड़े हुए हैं, तो दी ओनली आउटकम अदर देन डिफॉल्ट, फिर वो दूसरी तरफ यही है कि फिर हमें बेल्ट टाइटनिंग इतनी करनी पड़ेगी कि इर्रेस्पेक्टिव इकोनॉमी रुकेगी, इर्रेस्पेक्टिव आपकी इम्पोर्ट्स चोक होंगी. एंड फॉर द कंज्यूमर वो जो इम्पोर्ट्स चोक होने का मतलब बेसिकली ये है कि लोकल पीकेआर टर्म्स में वो इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रही हैं, राइट? बिकॉज जब सप्लाई साइड आपकी कम हो रही है, डिमांड आपकी सेम है या बढ़ रही है, तो वहाँ पर कंज्यूमर को तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि वो जो गाड़ी जो उनको 20 लाख की मिल रही है वो 50 लाख की मिल रही हो. बेसिकली वन वे टू कंट्रोल दी इम्पोर्ट्स, राइट? टैक्स लगा दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड सो बेसिकली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, जब वो इम्पोर्ट्स रुक रही होंगी तो जॉबलेसनेस भी हो रही होगी, इम्पोर्ट्स रुक रही होंगी तो एसेंशियली बाइंग पावर भी आपकी इरोड हो रही है, वो सारा कुछ हो रहा है. इट्स नॉट जस्ट कि लाइफ इज ग्रेट वर्सेस डिफॉल्ट वेयर लाइफ इज गोना बी डिफिकल्ट. You're looking at difficulty either ways. What you're basically trying to understand is कि कौन सी difficulty में हमें long term sustainability and long term growth ज़्यादा बेहतर मिल रही है, ऐसा ही है? Exactly. This is the fundamental question you have to ask, right? In terms of cost, क्या दोनों costly हैं. Let's not say one is less costly, or let's not say कि कोई एक option बहुत अच्छी है. दोनों costly है. The question or the judgment you have to make is ज़्यादा costly कौन सा है या कम कॉस्टली कौन सा है, and based on that judgment then you have to decide which of the two options is better. Let's forget default, let's talk about restructuring. It's a bit more, people are used to it, so they get less offended. Politically it's a bit more correct, right, even though it's effectively the same. But let's say restructuring, right? So that's the choice you have to make. और उसमें you have to then appreciate, and that's why IMF or the numbers they put out are super important. अगर IMF आपको कह रहा है कि आप 2 साल में, if you do what we say, 5% पे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी and then it will stay at 5% forever. आप उनकी 2032 तक की फोरकास्ट देखें तो वो 5% पे ही है. right. बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, the trend is between 3 to 4%. right? वो वक्ती तौर पे 3 to 4 की जो रेंज है उसको क्रॉस करके 5%, 6%, 6.5% पे जा सकता है, लेकिन घूम के उसने 3-4 पे आना है. Right? COVID, for example, आप उसमें कोई rebound हो गया, you get lucky a bit from, let's say, foreign flows, something like that happens, like CPEC वगैरह के time में, you get the number to go up to 6%, 6.5%, has to come back to 3.5%, unless कोई आप बहुत major structural reforms कर रहे हैं, जिसकी वजह से, let's say, आपका जो trend है वो jump up करके, let's say, 3-4 से 5-6 पे चला गया, right? So, but none of that is happening. And in absence of that, for the IMF to keep telling us कि नहीं यार आप 5% पे ग्रो करना शुरू हो जाओगे, that's highly misleading. क्योंकि that number then shows कि आपका debt to GDP ratio भी कम हो जाएगा, your debt will become sustainable from red to green or whatever yellow, whatever color profile that is, उसमें आ जाएगा. That's super misleading. And the way they're getting that number, my suspicion is they are feeding in wrong numbers around how much money is going to come in from private creditors. हम इधर Gulf वगैरह की भी बात नहीं कर रहे. We are thinking about, we are talking about private creditors. Private creditors ने आपकी हिस्ट्री में कभी आपको 4-5 बिलियन से ज्यादा नहीं दिया किसी साल में, और IMF प्रोजेक्ट कह रहा है कि that number will jump up to 8 billion and then it's going to go to 12 billion. Like, come on, right? So
so that also kind of feeds into a misleading perception that kicking the can down the road is somehow going to sort things out, right? Makes sense. So that's also important to the Makes story. But then just to re-emphasize the question you asked, I think that's the fundamental question, and that is what we should be focused on. Which of the two paths are less cost? मेक सेंस इसमें मैं एक लास्ट वैसे डेट के ऊपर गिवन मी अ गुड आउटलुक ऑन इट बट एक चीज जनरली मैं टिन फॉइल हैट पहन के साइड से बैठ के देखूंगा अगर तो मैं समझने की कोशिश करूंगा व्हेन आई वाज लुकिंग एट पाकिस्तानी डेट एंड पाकिस्तान के और सिर्फ पाकिस्तान की डेट नहीं है पूरी दुनिया में एवर सिंस द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज जो यूएस का हुआ है उसकी वजह से क्राइसिस सिचुएशन आई है पहली दफा नहीं आई पहले भी आ चुकी है जब भी यूएस डॉलर बीइंग द रिजर्व करेंसी जब भी उनका डेट वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पूरी दुनिया जो है वो परेशान होती है अब जाहिर है कि उसको देखते देखते मैं यूएस तक पहुंचा मैंने यूएस की इकोनॉमी को देखा वहाँ पे देख के रियलाइजेशन होती है कि हमारी क्वैक इकोनॉमिक्स है लेकिन उनकी भी काफ़ी हद तक क्वैक इकोनॉमिक्स जो है ना ऑन स्टीरॉइड्स चल रही है एंड जो ये सिमिलर क्वेश्चन आजकल बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स मैं यूएस इकोनॉमी के बारे में भी सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं 34-35 ट्रिलियन हो गया अब डेट उनका और वो अनसस्टेनेबल है और उनकी मिलिट्री बजट से ज़्यादा अब उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स होना शुरू हो गई हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ तो वो भी एक पॉइंट के ऊपर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जी अमेरिका या तो डिफॉल्ट करेगा या अमेरिका जो है वो इन्फ्लेट अवे कर लेगा अपना डेट एंड सो माई क्वेश्चन टू यू इज कि जो बेस्ड ऑन अगेन ये मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है सो इट मे बी अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन बट अगर दुनिया भर का तमाम जो आपका डेट है वो डॉलर पे पेग हुआ है और अगर हम कहते हैं कि पोटेंशियली डॉलर इटसेल्फ यूएस गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है वो इन्फ्लेट अवे करेगी अपना डेट would that mean that the rest of the world will in a way inflate away their debt as well courtesy of the US with अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में डॉलर आ जाता है और डॉलर की वैल्यू रिड्यूस होती है या would that be वो लोग तो कर सकते हैं क्योंकि वो प्रिंट करते हैं वो उसको इन्फ्लेट कर सकते हैं बट वो जो हम जैसे लोग हैं वो नहीं कर सकते और पर्टिकुलरली मैं इस वजह से क्वेश्चन कर रहा हूँ बिकॉज इफ देयर इज दैट पॉसिबिलिटी देन क्योंकि हमने पिछले दिनों सुना कि जी 16 बिलियन जो चाइनीज डेट है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग में एक टर्म ये है कि यार हम डॉलर से हटा के इसको चाइनीज युआन में कन्वर्ट कर दें तो अगर तो वाकई हमारा वो क्राइसिस बिल्कुल यूएस के साथ साथ जा रहा है और यूएस फाइनली उसको इन्फ्लेट अवे करने लगा है और उसमें फिर हम फाइनली आते हैं और आगे कहते हैं कि यार अब हम युआन पे जाएंगे तो wouldn't that be the biggest disaster in that context? Yeah, I think US के केस में so basically just to kind of bring back the economics to it, right? So what we are basically saying is कि अगर यूएस में भी इन्फ्लेशन जो है वो 2-3-4% से जंप अप करके लेट्स से 10% पे चली जाती है और वहीं रहती है राइट पिछले लेट्स से एक साल में इट जंप्ड अप एंड देन इट केम बैक और लेट्स से जो क्राइसिस सिनेरियो की आप बात कर रहे हो तो अगर यूएस में भी इन्फ्लेशन 10% है पाकिस्तान में भी ऑन एवरेज अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो 9-11% उसके बीच में रेंज करती है तो अगर इफ दैट्स द केस द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट कि आपका एक्सचेंज रेट विल बी स्टेबल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स क्योंकि जो आपका एक्सचेंज रेट जो है उसने जो कंपेटिटिवनेस के प्रेशर्स हैं उनके रिस्पांस में एडजस्ट करना होता है राइट अगर आपकी प्राइस बढ़ती है और यूएस की प्राइस उतने से नहीं बढ़ी तो एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ताकि वो इंटरनेशनल टर्म्स में आपकी प्राइस 9-10% जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है वो उनके 9-10% के इन्फ्लेशन पे कवर हो जाएगी और वो एक्सचेंज रेट बेसिकली नॉर्मलाइज हो जाएगा एक्सचेंज रेट फिर आपके डेप्रिसिएशन प्रेशर्स आपके जो अदरवाइज परसिस्ट करते हैं और जो फॉर अ गुड रीजन वो होते हैं वो फिर आपके चले जाएंगे बियॉन्ड दैट so that's the story that's going to play for us right other than that I think but it's only to I mean yeah just देखिए go for it my question is अगर मैं for example assume करता हूँ कि the US government goes into a money printing spree and they're basically pumping a lot of money into the economy that money to put it simply again माजरत मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ बट अगर एक टी शर्ट का ऑर्डर आया हुआ है पाकिस्तान से $5 की है ठीक है अब वो जो है ना ओवर 3 ईयर पीरियड वो $5 से $10 की हो गई है राइट सो जो नेट एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं वो बेसिकली फॉर द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स वो लेट्स से 10 अरब से अब 20 अरब हो गई हैं राइट सो आप ये कह रहे हैं कि वो टेक्निकली तो हमारी रिसीवेबल्स तो बढ़े हैं ना अगर ग्रांटेड के अगर हम जो है हमारी इम्पोर्ट बिल भी बढ़ेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग but then a lot of that is not being imported from the US. I'm just trying to understand that if the rest of the world stays the same and the US dollar depreciates, does that not reduce your debt bill because it is pegged to the dollar, if that makes sense? Yeah, अगर US dollar depreciate करेगा, so what does it mean? आप
अगर आप एक्सपोर्ट competitiveness की बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि आपका जो रियल एक्सचेंज रेट है, अगर डॉलर डेप्रिशिएट करेगा तो they'll become more competitive, right? For a short term, not you. Because for them to buy the goods in rupee will be expensive than before, right? Right. So in that sense, the competitive advantage will go to them for a short time period until prices adjust to a point where you are back to normal. अब for example, अगर आप real exchange rate, जो real effective exchange rate जो हम बात करते हैं, उसको देखो, it's been pretty flat, right? For a long period of time. It goes up, goes back to 90s or 80s, comes back to 100. I'm not saying 100 is the equilibrium value, but then over a very long period of time, it kind of keeps fluctuating around some central tendency, right? So, ये जो pricing adjustments होती हैं, exchange rate fluctuations होती हैं, they give you an advantage for a short term or put you in a disadvantage in a short term. But over the time period, unless your productivity improves, or you become more competitive structurally speaking, in the long run, the effect is not as much. Unless you keep your real exchange rate undervalued systematically for a very long period of time, which is what we saw China do, which is also what we saw East Asian economies do after the 80s, right? So unless you do that, systematically keep it undervalued for a very long period of time, then you'll have enough time to build capacity and then capitalize on that. But if you are not doing that, then these fluctuations kind of help you or go against you for a short time period. लेकिन उसके बाद So pressures, they kind of bring you back to where you were. Basically, what you're basically saying is कि हम ये decide कर लें कि यार हमने 10% depreciate करना ही करना है हर साल. Like पहले भी करते आ रहे हैं, economy उसके around tailor हुई भी है, तो हम 10% depreciate करते रहें, even if dollar depreciate हो रहा है, but हम अपनी competitive advantage continuously बरकरार रखें. But that will be a policy, right? अगर आप if you leave it to market, अगर डॉलर भी 10% वहाँ पे भी इन्फ्लेशन 10% है, आपकी तरफ भी इन्फ्लेशन 10% है, तो अगर if you leave it to market, exchange rate doesn't need to change too much, वो थोड़ा बहुत fluctuate होगा depending on the market forces. इधर शॉक पड़ गया, वहाँ पे शॉक पड़ गया, that's the end of the story. If you want to build a competitive advantage, then it doesn't really matter whether US inflation is 10% or 2%. You can always let your currency depreciate by enough to make sure that your real exchange rate remains undervalued for a very long period of time, right? Not just for a few years, but for a very long period of time. So everyone in the industry and the foreign markets know that you will maintain export competitiveness systematically as a matter of policy. Would you say it would be smarter? Right now, what we're seeing in Pakistan is कि आपने by policy आपने imports को choke किया हुआ है, right? आप LCs नहीं खोलते, आप डॉलर जो आपकी प्रॉफिट्स हैं उनको रिपैट्रिएट करने से वो रोकते हैं. इन अ वे आपने एक गेट लगा दिया और आपने कहा कि मैं डिसाइड करूंगा पैसा बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा. Would you say this is a better policy or would it be better to actually जो आपने अभी alternate बोला कि आप डेप्रिसिएशन थोड़ी ज्यादा कर दें, मार्केट खुद ही से जो है वो इंपोर्ट्स को चोक कर लेगी, ऑब्वियसली बिकॉज बेसिक डिमांड सप्लाई के ऊपर. अगर आप मेरे से पूछो, I'll probably say if you have to pick a choice, then I'll go for, let's say, keeping the currency undervalued systematically. And that also means, how do you do that? It's not very hard. It's basically, जो भी आपके flows आ रहे हैं, आप उनको reserves की form में accumulate करते रहें, rather than just spending them out here and there for consumption purposes. And that kind of keeps the currency or the exchange rate, उसको वो फिर, let's say, for example, अभी आपको इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक्सचेंज रेट को 6% डेप्रिशिएट होना पड़ता है ऑन एवरेज. मैं 10-20 साल की बात कर रहा हूँ, नॉट 1 year or 2 year or here and there. Let's say आपको कि यार हम rather than 6% on average, we want to aim for, let's say, 7%. Right? So that would mean your exchange rate is depreciating by more than what is required by the prices. आपकी prices, let's say, 10% से बढ़ी हैं, आपने exchange rate को, let's say, 11% से गिरा दिया, एंड देन अगर आप इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करो, देन बेसिकली आप जो है रियल टर्म्स में यू विल बी मोर कंपेटिटिव देन अदरवाइज. लेकिन देयर इज अनदर वे एज वेल. इट्स नॉट कि आपने एक्सचेंज रेट को गिराना ही गिराना है, आप इन्फ्लेशन को भी कम कर सकते हो, राइट? अदर कंट्रीज हैव डन दैट. आपको जरूर है आपने 10-11% की इन्फ्लेशन चलानी है, यू कैन ब्रिंग दैट डाउन टू 2%, 3%, 4%. इट्स गोना बी कॉस्टली, बट इट्स गोना बी अ शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन. If you end up, for example, India को आप देखो, India में कितनी inflation है? The average inflation is around 4% or so, right? Or this is something which they have achieved over the last 10 or so years, right? It's historically inflation was high over there as well. So if as a matter of policy, आप अपनी inflation को कम कर लो around 2-3%, US में let's say it's 2.5% on average, Pakistan में if it's 2.5% on average,
then you don't even need to let the exchange rate depreciate by 6% No, to but maintain that how, competitiveness. how do you do that? I thought inflation is market driven, right? So how do you control inflation? Is that through lowered government spending and again locally आपने markets को choke कर दिया या how does that work practical terms के अंदर? How did India do that, for example? Yeah, over the long term तो money supply के साथ relationship है, right? But it's a lot more complex क्योंकि money also gets created. Banks जब loan देते हैं तो आपके account में credit आ जाता है और जो credit होता है वो भी money consider किया जाता है, तो there is that as well at play. So really the key thing is you need to convince the market. So let me make it very simple. You need to convince everyone, whether you are a worker, whether you are a firm who's selling a product, whoever you are, whether you're a government who sets minimum wages or let's say revises pensions and so on, you need to convince everyone कि यार अगले साल से और अगले 2 सालों से इन्फ्लेशन आपकी 2%, 4%, 5% जो भी आपका नया टारगेट है वो होगी, right? Once you convince everyone, so this is I'm making it very simple. जब वेज पावर गेन होगी वो भी 4%, 5% पे होगी. गवर्नमेंट जो सैलरीज इंक्रीज करेगी वो भी 4-5% पे होगी. कंपनियां जो अपनी प्राइसेस इंक्रीज करेंगी उसमें प्रोडक्टिविटी वगैरह यू अकाउंट फॉर दैट, दे विल आल्सो डू दैट बाय 2%, 3%, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, सो यू कैन बिकम बेटर एट डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. सो रादर देन 4%, 5%, you increase it by 2%, 3%. So you've already solved the problem. The bigger problem is how do you convince everyone that that's going to happen in 2 years' time, right? So that's where the central bank and the fiscal authorities have to come together. Practically speaking, you have to shock the system. Say we are willing to pay the price that's required. That means we're going to choke the economy, like let's say Paul Volcker did back in the 80s in the US, and other central bankers did in other countries as well, until you convince the market that the future is going to be different as far as inflation is concerned. Once you convince the market, then it's going to be 2%, 4% there, right? So really the challenge is how do you convince the market, and what is the cost again that you have to pay to convince the market that that is going to be the case, right? So you have to pay the cost in any case, but here it's important that the central bank or fiscal authority they are on the same page. It cannot be कि central bank जो है वो तो interest rates बढ़ा रहा है और वो inflation को कम करने की कोशिश कर रहा है, और government जो है वो दूसरी तरफ से जाके बैंकों से कर्जे पे कर्जे लिए जा रही है. तो that is not going to work. So both of them will have to be on the same page. यहाँ पर जो एक मेजर प्रॉब्लम वो यही आ रही है कि जो अगेन जो गवर्नमेंट होर्डिंग ऑल ऑफ द मनी जो कि ना प्राइवेट सेक्टर में जा पाता है ना कहीं और जा पाता है, और वो बस कॉन्स्टेंटली कर्जे ले जा रही है और फिर वो पैसा इवेंचुअली पंप होता है मार्केट्स के अंदर. द गवर्नमेंट रियली नीड्स टू फिगर आउट इट्स बुक्स एंड फिगर आउट के थोड़ी सी हम फाइनेंशियल हाइजीन हमारे अंदर आ जाए. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को स्विच करता हूँ. You've mentioned multiple times, you talked about productivity and competitiveness. We keep on talking about, even आजकल हमारा जो discourse है वो इस चीज़ के ऊपर focus कर रहा है कि यार जो इस वक्त current looming crisis है of debt and this and that, उसको कैसे fix किया जाए. आपने पहले mention किया, आपने कहा 2001 में हमने similar situation देखी. And I feel like कि because वही वाली बात है कि हमने उस time के ऊपर जो prevailing crisis था उसको तो solve कर लिया, but we didn't have a lot of understanding of कि अच्छा हमने अब ठीक है, अब इस वक्त जो banker है वो बार बार खटखटा नहीं रहा, तो अब हमने घर के अंदर क्या रिफॉर्म्स लेकर आने, राइट? हाउ डू वी इंश्योर दैट वी डोंट गो बैक देयर? टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट. आई रेड योर आर्टिकल रिसेंटली अबाउट पाकिस्तान की जो प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स हैं और उसको किस तरीके से हाउ कैन वी ग्रो आउट ऑफ इट, क्योंकि पहले भी हम बात कर रहे थे एंड वी सेड आइदर यू डिफॉल्ट और यू टाइटन योर बेल्ट, बट देन लोग आते हैं और आके एक थर्ड बात करते हैं, लोग कहते हैं नहीं बट व्हाई कांट वी ग्रो आउट ऑफ इट, राइट? So then again I have that question for you. Okay, why has Pakistan not been able to grow out of its debts, out of its sort of spiral जो कि हर थोड़े से बाद हमें IMF के सामने खड़ा कर देता है? Yeah, that's very important, I think, and they are kind of related as well. So why are they related? Let's go back to 90s, right? So 90s, I was reading Dr. Ishrat Hussein's new book, forgetting the name. So in that, he kind of talks about the reforms and then how India, Bangladesh, and Pakistan evolved over the period of time, what was the economic makeup of these countries. And you actually find that the makeup was not, or the structure or the policies they were implementing were not too different. They were not too out of sync with each other in the 60s, 70s. We import substitution, subsidies, incentives, protection. And then come 90s, starting a bit more from late 80s, you end up reforming your economy. What does reform mean in this case is more privatization,
bringing in, let's say, opening up to foreign investment, lowering the the tariffs, and so on and so forth. So you kind of wonder, if in the 90s, Bangladesh, Pakistan, China, they kind of implemented very similar programs or very similar kind of policies, then why are the future trajectories so different, right? That's pretty fundamental. Just to put some context, अगर आप लेबर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ देखो, व्हाट इज लेबर प्रोडक्टिविटी? लेबर प्रोडक्टिविटी मींस के जो भी बंदा काम कर रहा है ऑन एवरेज वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? सो दैट्स इट. That depends on your managerial skills. For example, company kitni smart hai ya managers kitne smart hai in terms of using, let's say, computers or laptops or gaadiyan, buildings and the people together. And that also depends on how much of capital do you have. To put it very simply, मैं context में डालूं कि एक बंदा है, वो jeans export वाली फैक्ट्री में काम करता है, तो वो कितनी जीन्स एक दिन में सी सकता है, राइट? पैसे तो उसको तनख्वाह तो एक ही महीने की मिल रही है, लेकिन अगर वो महीने में या तो 10 जीन्स भी सी सकता है, वो 100 जीन्स भी सी सकता है. जो डिफरेंस बिटवीन 10 जीन्स एंड 100 जीन्स इज द प्रोडक्टिविटी जो उस बंदे की है. वो बेसिकली कोई 10 100 that's productivity. That's labor productivity, right? We have different measures, but then let's stick to labor productivity. Or this will depend on two things. One, कि manager फैक्ट्री कितनी अच्छी चला रहा है, right? And it will also depend on कि जो मशीनें उसके पास हैं वो कितनी ज़्यादा हैं और कितनी अच्छी क्वालिटी की हैं, which is हम उसको physical capital कहते हैं in economics, right? So that's broadly speaking. But stepping back, over the last 30 years, 1990 से अगर आप देखो 2018 तक, जो पाकिस्तान में productivity growth थी हर साल, that's about 1.3%. अगर आप बांग्लादेश में उठा के देखो, I think that's 3.8% or something like that. India is 4.8 or between 4 to 5%. China is even higher, I guess 7% or 8%. So this is कि हर साल आपकी productivity कितनी grow कर रही है, कितनी मजीद आप jeans produce कर रहे हो. So see how low the productivity growth is in the case of Pakistan over the 30-year period. Why do you think that was? So just to link it to 1990s, when all the economies kind of opened up, they went towards privatization, they lowered the trade tariffs, and so on and so forth. But the future trajectories are very different. Also very interesting, if you look at the data on capital flows, कि कितने पैसे बाहर से इन मुल्कों में आ रहे हैं, so all the three countries actually got quite a lot of money coming in as a proportion of GDP. China में बहुत ज़्यादा था, was around 4 to 6% of the GDP हर साल जो बाहर से पैसे आते थे. India was somewhere between 4% of GDP जो बाहर से पैसे आते थे. Pakistan was 2%, कम थे. Surprisingly, बांग्लादेश में हमेशा पाकिस्तान से भी on average कम पैसे आए. So we are not that bad in terms of the money that we got from outside in terms of private investment. So where are things going wrong, right? So why is productivity so low? And that's where I think things become a lot more important. That there's एक major factor है जो different है, which kind of tells you कि जो policy makers की thinking क्या है. And then I'll link it back to the bigger question. Another factor which is very interesting, बांग्लादेश में भी पैसे आए, पाकिस्तान में भी पैसे आए बांग्लादेश से ज़्यादा, इंडिया में भी पैसे आए, चाइना में भी पैसे आए in the same order. चाइना ने उन पैसों को सेव किया डॉलर रिजर्व्स की शक्ल में, बल्कि उससे भी ज़्यादा सेव किया जितने आए, बल्कि अपनी जेब से भी निकाल के उसने सेविंग में डाले, जिसकी वजह से वो करंट अकाउंट सरप्लस रन करते रहे. इंडिया ने अपनी जेब से तो नहीं निकाले, लेकिन इंडिया ने भी जो ज़्यादातर पैसे आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा सेव किए. तो करंट अकाउंट डेफिसिट वो रन कर रहे थे, लेकिन कम रन कर रहे थे जितना वो कर सकते थे. बांग्लादेश ने भी सेव किया, कई सालों में उन्होंने भी अपनी जेब से पैसे निकाल के टेबल पे रखे और जो आ रहे थे उनके साथ मिला के सेव किए. पाकिस्तान 2 सालों में सेव करता था, अगले 2 सालों में खर्च. 2 साल आप सेव करें, अगले 2 साल आप फिर खर्च. So you are getting the money, saving it, spending it, saving it, spending it, saving it, spending it. आपने रिजर्व बफर्स बिल्ड नहीं किया. Why are reserves buffer important? They are important जब इन्वेस्टर कहेगा यार अच्छा कल अगर बाकी इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं इस मुल्क से, इस मुल्क का तो एक्सचेंज रेट पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो मेरा क्या हो, right? So given that risk, they might not even enter the market because they think कोई underlying किसी ने इंश्योरेंस नहीं लिखी हुई. Reserves are a form of insurance in a way if you want to think in that terms, right? The question is, पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स, why are they so different? क्या वो मार्स से आए, right?
they are the same people, they speak the same language, they understand these things. जब आप उनसे बात करते हो, I'm sure you have enough of an experience to talk to them in podcasts. It's not that they're not idiots, right? But why is it that they are so short-sighted, right? Is that a And political? that's where things become a lot more. And let me kind of link it with one more thing. This short-sightedness, और ये जो आपने इंश्योरेंस कवर नहीं क्रिएट किया, इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी नहीं लिखी आपने रिजर्व्स की शक्ल में, this then also means कि बूम एंड बस्ट साइकिल्स आपकी तरफ बहुत ज्यादा हैं बनस्बत बाकी कंट्रीज में, स्पेशली पोस्ट 1990s, राइट? थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी को शॉक लगता है, चाहे वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, थोड़ा सा आपने फिस्कल एक्सपेंशन कर दी, मतलब इट्स क्रेजी, थोड़ी सी आप फिस्कल एक्सपेंशन करते हैं, शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने फिक्स irresponsible policy, but nonetheless within 2 months, within 6 months you have a crisis. यार किस इकोनॉमी में 6 महीने की लूज फिस्कल पॉलिसी से क्राइसिस आ जाता है? I'm talking about the current times, right? पुराने टाइम्स में तो बहुत कुछ होता था. So so that's how vulnerable you are. And what does that mean? Given that so much इतनी ज़्यादा uncertain है आपकी इकोनॉमी, and इतनी vulnerable है वो शॉक्स को, चाहे वो एक्सटर्नल शॉक्स हो in the form of oil price shocks, commodity price shocks, US monetary policy and whatever not, या वो domestic shocks हो या irresponsible policies हो, जो भी आप उसको कह लें, डार साहब हो या शौकत तरीन साहब हो, जो भी हो, any government policy. Why is the economy is not resilient at all, right? It's so vulnerable. And that kind of brings you back to productivity. क्यों काम है? Productivity इसलिए काम है कि कोई मशीनें लगाने को तैयार ही नहीं है. Back to the factory example. बंदे तो आपने रख लिए, लेकिन मशीनें आपने अपग्रेड नहीं करनी, मशीनें आपने नहीं लगानी, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसका भरोसा ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होना है. रिटर्न्स आप कहते हो, जब आपके पॉलिसी मेकर्स जाते हैं दुनिया में, कहते हैं पाकिस्तान में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं. आई थिंक दे आर राइट, रिटर्न्स अच्छे हैं पाकिस्तान में. But what about the risk? You don't just look at the returns when you're investing, you also look at the risk. The risk is so goddamn high that even the very attractive returns are not attractive when you take into account the risk that people have to take. But right? the risk largely, and that the risk to confirm, the risk largely is because आपके पास foreign exchange reserves नहीं है, और वो largely exist करता है because of policy. ऐसा ही है या कोई और risks है? मतलब when we talk about so there are many other risks. Right. There are many other risks. There are political risk, policy continuity risk, all that stuff is there. But I think if you look at the financial risk, the financial risk is very much tied to, okay, fine, if you are hit by a shock, what's going to happen to exchange rate, right? आपकी economy returns to deliver कर रही है ना, but at a very high risk, right? So if there's no underlying insurance mechanism in the form of reserves, I'm not saying this is the only factor, don't get me wrong, but this is a very important factor. And this kind of, अब जब कोई मशीनें ही लगाएगा तो आपने फिर 130 साल में आप 100, जहाँ पे हर बंदा जीन्स बनाता है उसने 200 पे ही जाना है ना मुश्किल से, राइट? अनलाइक अदर्स जो 1000 पे पहुंच गए, 20,000 पे पहुंच गए, व्हाटएवर, राइट? तो that uncertainty in the environment, which is driven by the short-sightedness of the policymakers, is quite telling. Interesting. मुझे ये बताएं कि then what's the solution? Again आपने कहा 90s में हमने बांग्लादेश को भी देख लिया, हमने इंडिया को भी देख लिया, हमने चाइना को भी देख लिया. इंडिया चाइना more so, to be very honest. बांग्लादेश को मैं देखता हूँ irrespective of whether लोग कहते हैं कि थोड़े से वो आपसे बेहतर हैं, मसले बाय एंड लार्ज उनके भी बड़े सिमिलर हैं. उनके भी कुछ साल अच्छे आते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद जो है कोई ना कोई मसला हमेशा आपको नजर आ ही रहा होता है. अगर मैं इंडिया और चाइना से कंपेयर करूं, पर्टिकुलरली बिकॉज आपसे तो वो दोनों बहुत बेहतर हैं, बट अगर वो आपस में भी उनको कंपैरिजन करें तो उन दोनों की भी दो डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज रही हैं और दो बहुत डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज इमर्ज की हैं उसमें से. आज अगर हम साइड से बैठ के इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या समझ आता है कि ठीक है, ओके, व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू अंडरस्टैंड, ओके, वी आर इन अ क्राइसिस. आई डोंट वांट टू लिंगर ऑन हियर कि यार अब तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, लेट्स से टुडे इज द बेस लाइन एंड हियर इज वेयर वी स्टार्ट, राइट? आई डोंट लुक एट 3 years ago एंड से कि हम बहुत बुरे हो गए. I'm saying यहाँ से शुरू हो रहे हैं. Where do we go from here? If one has to create policy ground up and decide कि okay, जो भी हो गया वो हो गया, आज से अब आपने इस जगह पर आगे लेकर जाना है, then what do we do to increase the productivity, increase? बहुत सारे मसले आपने बता दिए ना. आपने कहा जी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस का भी प्रॉब्लम है, रिस्क का भी प्रॉब्लम है. लास्ट टाइम हमने रिस्क की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की तो हमने अजीब गरीब किस्म के सॉवरेन गारंटीज दे दी और उसकी वजह से जो है जी आज हमारा एक नया क्राइसिस खड़ा हुआ है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जो कि आज अगले 20 साल बाद हमारे गले ना पड़ जाए, कि हम आज जो है वो दिखाने के लिए तो हम कर देंगे, देखो हमने बाहर से पैसा भी ले आए, देखो ये भी हो गया वो भी हो गया, बट इट हैज टू बी ऑन टर्म्स दैट आर मच मोर, आई डोंट नो, ड्रिवन बाय द मार्केट, आर मच मोर, are done in a way
जो कि सेल्फ सस्टेनेबल हो, उसमें बार-बार जो है ना हम assumptions पे ना चलें कि if this and this happens then all is good, otherwise we're screwed. Here is I think this is interesting because you mentioned China and India. So they're also very different economies in the sense that the scale of those economies, right? So let me just re-emphasize one thing before I move in a different direction, which is that the short-sightedness on the part of policymakers and what that means for, let's say, जो आपकी vulnerability build हो जाती है, the short-sightedness और उसमें boom and bust cycles आपका होते हैं, all that is super important for investment purposes, which I think also to an extent explains आपकी investment rate इतना कम क्यों है बाकी countries से, which also then means something for productivity. So it's a separate question to think about कि वो short-sighted इतनी क्यों है. I think that's very kind of driven by the political economy problem which you deal with. आज एक की regime है, कल कोई और regime है, you don't know who's going to be in the power, let's say 3 years down the line, which is also what Dr. Isher talks about in his book in a very explicit manner. So that's, I think, a very good hypothesis to keep in mind when we are to make sense of this. But coming back to, so that's one thing which I'll really highlight, the risk, the financial risk, the macroeconomic risk that's out there, which is driven by the short-sightedness of the policymakers, which has a very good reason behind it, right? Not because they are idiots or they don't like the country. Now, coming to the bigger problem. The bigger problem is, and this is the example I really like to give. Pakistan में जो आपका एवरेज बंदा है, राइट, उसकी इनकम सालाना इतनी भी नहीं है कि वो जाके टॉप एंड का आईफोन खरीद सके, राइट राइट. अब आप, व्हाई डज इट मैटर? अगर आपने इंडस्ट्रियलाइज करना है, यू नीड पीपल हु कैन बाय स्टफ, राइट, सिंपल एज दैट. अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है और आपने हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगानी है, you need people who can buy stuff. हम गाड़ियों के ऊपर ऑटो सेक्टर में ये 2 लाख 3 लाख गाड़ियां हमारी साल की बिक जाती हैं और उस पे कहते हैं अच्छा यार इस दफा तो ऑटो सेक्टर में बहुत बूम आया हुआ है. Look at what is happening in the international market. A single conveyor belt or a plant is producing millions of vehicles. The scale they are operating at is huge, and that is what is letting them industrialize or push the frontier forward. Why or what is making them sell so much of the vehicles or the industrial output that they are making? Even they have a much bigger purchasing power because they have integrated with the rest of the world, right? They are operating in much bigger markets. Pakistan, if you compare Pakistan, East Asia, सारी countries, China, India, सब कुछ, अब Malaysia वगैरह वियतनाम मिला दें, Pakistan is at the bottom end when it comes to how open we are with the rest of the world. How integrated we are in terms of imports and exports, how integrated we are in terms of the supply chains or the value chains or the global value chain, which the term the economists use. We are at the right bottom of that distribution. What does that mean? That means we are operating in a super small economy, and we are hoping कि फलां को सब्सिडी दे दो, फलां को टैक्स ब्रेक दे दो, फलां की चीजें आप खुद खरीद लो, उससे आप इंडस्ट्रियलाइज कर जाओगे. इस इतनी छोटी इकोनॉमी में जहाँ पे आपका एवरेज बंदा जो है वो आईफोन खरीद नहीं सकता, अपनी सारी इनकम भी वो लगा दे, उस इकोनॉमी में इफ यू कीप इट क्लोज आप नहीं इंडस्ट्रियलाइज कर सकते, राइट? एंड दिस इज, इंडिया इज नॉट वेरी, एनीवे, सो इंडिया इज मच बेटर, बट नॉनदलेस दे आल्सो हैव अ प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रीक in their policy making discourse. But they have less of a problem because they are a very big economy, right? Even if you think about, even if their GDP per capita is probably the same as Pakistan or a bit better now, in the past it wasn't that high, or probably Pakistan was better, there are still a lot of people to buy stuff to lead to industrialization, right? Likewise, China. So we can't really compare with them to the same extent. We really need to think about how we can expand the market, right? And आप markets कैसे expand करते हो? You go into regional trade agreements. That's the modern way of doing things. You have free trade agreements which are across the globe with any country here and there. But more in the last 20, 30 years, you have seen countries, they are part of the global economy, but they have become a lot more integrated regionally. ASEAN countries को आप उठा के देख लो, they keep on expanding the set of countries that are part of ASEAN. उन्होंने RCEP बना दिया. African countries, they got together, they were lagging behind, they got together, they ended up creating an African Union, or usme they ended up creating a trade bloc. EU has been part of
the common market, both labor भी move कर सकता है, goods भी move कर सकती हैं, finance भी move कर सकता है. So they have kind of expanded their market. And EU doesn't matter because France is big or Germany is big or UK is big or was big, but because the European economy as a whole is very big. And then that also gives them a big clout in the policy stage, in foreign policy, and so on and so forth. US, despite being very big, also ended up integrating with, let's say, Mexico, with Canada through NAFTA and all that. They were integrated with the EU. GCC countries, a more recent example, they have also ended up integrating their economies between themselves, right? Labor भी move कर सकता है, goods भी move कर सकती हैं. It's a lot more easier to go between one country and another if you are within the GCC bloc. So where is Pakistan? हम इधर अकेले बैठे हुए. और if I go back in the past, it was quite a lot of the blame lies with us. जो हम इंडिया के साथ भी kind of हमने बना के रखी कि नहीं, हमने इनको मार्केट एक्सेस नहीं देनी अफगानिस्तान तक के लिए, एंड देन हमने उसको यूज करना है स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए, rather than thinking about कि यार how can we get into an arrangement which is mutually beneficial. More recently, up to India, I think they have taken a very different position, and I think now it's kind of from, I'm not a foreign policy expert, but my naive reading is now it's kind of their policy to just undermine Pakistan both politically and economically going forward, right? So now I don't know how much of a room there is to play with them, but in the past, obviously, we wasted a very good opportunity for strategic reasons. The problem with China, हम कहते हैं China के साथ हमने FTA तो sign कर लिया. The problem is a lot of China's econ power is not closer to us. It's really on the other side of it's on the other side of the Pacific, right? It's closer to Pacific. So the powerhouse, the China, which was meant to lift Pakistan because they'll divert their trade to Gawada, they don't really care about this side of the country. They care about their province, so it gets developed over the period of time because वहाँ पे भी there are issues with security and all that. तो चाहते हैं कि वो develop हो जाए and it doesn't stay behind. But that's not an economic powerhouse of China. If they are going to trade, they're going to trade you through Pacific, or Russia के साथ ऊपर energy trade, or Central Asia के साथ through the other way around. So we kind of keep on assuming कि कोई हमें आके बचा लेगा. Now then, the only thing which is left is GCC. Maybe आप GCC के साथ integrate हो सकें. Afghanistan is a again problem. There's a lot of this. There's a lot of stuff. काफी हमारी अपनी गलतियां भी हैं. कुछ they were kind of given to us for geopolitical reasons. But I do think at the same time, कि internal discourse आपका policy का, it's not geared towards integration. It's geared more and more towards protection. हमने टेक्सटाइल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमने ऑटोज को कैसे प्रोटेक्ट करना है. यू पिक अप द इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में डोमिनेट करती है. गंजालो ही केम अप विद द पेपर, उसमें ही गिव द फिगर्स इन टर्म्स ऑफ कि कितनी प्रोटेक्शन है. फूड, फर्टिलाइजर्स, ऑटोज, टेक्सटाइल्स, all the big industries that you name in Pakistan, they have super high protection. If your whole economy is geared towards कि नहीं हमने domestic economy को बस सर्व करना है और उसी से पैसे कमाने हैं, then there's only so much you can do out of that, right? में लेकर right, so जब आप प्रोटेक्शन अगर फॉर एग्जांपल हटाते हैं, आप फ्री फ्लो करते हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड पीपल दैट आई हैव स्पोकन टू, टेक्निकली आपको पाकिस्तान में चीनी नहीं बनानी चाहिए, because you are a water scarce nation. You will actually get cheaper chini from let's say Pacific Asia or other countries, and so you'll have to radically redesign कि आपके मुल्क में क्या बनता है. आप ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको एफिशिएंट करेंगे, हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएंगे. पोटेंशियली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आई फील लाइक कि मोटी मोटी तो हम बात कर लेते हैं, बट जब हम इंडिविजुअलाइज चीज़ों पे आते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है, राइट? चावल हमारा एक बहुत मेजर एक्सपोर्ट है, लेकिन अगेन चावल इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप. सो क्वेश्चन मार्क फिर आएगा कि क्या हम फिर इवेंचुअली, अगर हम ओपन मार्केट एक्सेस कर रहे हैं, हम प्राइस को रियल मार्केट पे लेकर आ रहे हैं, रादर दैन कि हम उसको, क्योंकि आज अगर हम एग्री की बात करते हैं, एग्री में हम पानी को प्राइस ही नहीं कर रहे, और अगर आज आप ना करें तो कल कोई क्राइसिस खड़ा होगा. ये वही जो आपको डॉलर के साथ हुआ है. एक पॉइंट आएगा जब आपका पानी इतना स्कार्स हो जाएगा कि eventually, you're not going to be able to utilize it to flood your fields the way that you're able to do it right now. So either you price it properly going forward, or you wait for a conflict to arise where water availability is an issue. And so in a lot of ways, when people really ऊपर वाली बात तो कर लेते हैं कि we need open market, we need to do this and that. अनफॉर्चुनेटली जो उसकी रेपरकशंस हैं, क्योंकि हमेशा हर पॉलिसी का जो शिफ्ट होता है, जो कन्वर्जन होती है फ्रॉम एन इनएफिशिएंट टू एफिशिएंट, उसमें जो इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज हैं उसमें लोग कनेक्टेड हैं, उसमें लोगों की नौकरियां कनेक्टेड हैं, उसमें खानदान कनेक्टेड हैं, एंड सो दे आर द वंस जो कि फिर आके खप मचाते हैं, और उस खप की वजह से, फॉर गुड रीजन और बैड, बट उस खप की वजह से फिर इवेंचुअली
फिर हम वो रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, राइट? चाहे वो इनएफिशिएंट स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जहाँ की यूनियंस आपको आके कॉन्स्टेंटली परेशान रखती हैं, या वो गवर्नमेंट का इतना बड़ा साइज है जो कि इनएफिशिएंट है लेकिन वो रखती हैं. So do you think कि पाकिस्तान के अंदर there is a communication problem there as well, where we don't have, आपने कहा ना पॉलिसी के अंदर लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, बट आई ऑल्सो फील लाइक कि पॉलिसी कभी कोई बताता भी तो नहीं है ना. मतलब वो in a lot of ways a lot of these politicians don't really truly understand it themselves maybe, कि बस वो एक ऊपर से एक पॉलिसी आ जाती है, बस वो उसको जो है ना वन वे और द अदर घुमा फिरा के जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, where they could potentially come in, give a vision and say, listen, okay, the hardships are coming, but this is the 5-year vision. I personally feel like जितना मैंने पब्लिक को अब देखा है, और मैंने अपने उस पर देखा है कि यार हम पढ़ी लिखी बातें करते हैं, बड़ा अच्छा बंदा जो है पढ़ी लिखी बात सुनने के लिए भी रेडी है, कि पब्लिक का अब सेंटिमेंट बदल गया है, पब्लिक रेडी है कि यार आप हमें बताओ हम सुन लेंगे. बट उनको वो बताया भी नहीं जा रहा, उनको बस they're forced into a policy rather than sort of eased into it. Yeah, I think I kind of frame it. So this is quite interesting, this conversation. So, let me correct one thing. Right. I think there's a lot of policy continuity. Right. I don't think there's a lack of policy continuity. From the 750s, 60s onwards, protection आपने दी हुई है, right? आपने 90s में फिर reforms की. If you look at Adil Malik's paper at Oxford, so he wrote a paper in the context of Pakistan. आपने tariffs को liberalize किया in the 2000s, but then the political economy kind of got them back up to where they were back in early 2000s, right? Then you kind of impose other custom duties. आपका tariff अगर low भी है, on paper custom duties add कर दोगे, taxes add कर दोगे. Yeah, you can come up with all kind of things to take the price back to where it was, to provide the protection in real terms. So there's a lot of continuity in terms of कि हमने protection provide करनी है, हमने real estate को promote करना है, हमने agriculture में taxes नहीं लगाने. You talked about agriculture, that's super important. 40%, almost 40% of your labor force is in agriculture. Almost 40% of your labor force is in agriculture. And agriculture is the least productive sector in Pakistan. वही metric कि आप एक बंदा कितना प्रोड्यूस करे. बाकी कंट्रीज, not just relative to the rest of the world, but within the country, agriculture is the least productive sector आपका. और वो 40% आपकी जो लोग हैं काम करने वाले, वो उस सेक्टर में काम करें. अब how can you get growth out of that, right? You need people to move in productive sectors, and so on and so forth. But let me kind of spin this around. You were talking about riots and कि वो थोड़ा मसला, transition is difficult. Transition is definitely difficult. लेकिन अगर आपने नए sectors की तरफ जाना है जो ज़्यादा productive है, right? So we want the economy to get transformed. Agriculture से labor force जो less productive है, वहाँ से I'm not saying कि आप agriculture को भूल जाएं और उसमें invest ना करें और उसको मज़ीद productive करने की कोशिश ना करें. But at the same time, you want the economy or the people to be working in sectors which are more productive or which can be more productive going in the future, right? So what does that need? If you want some of the sectors to do better, what does that need? उसके लिए आपको finance चाहिए, आपको labor चाहिए, आपको land चाहिए. और land भी ये नहीं चाहिए मोटरवे पे कहीं भी साइड पे आप land इकट्ठा कर दो, जिस तरह हमें शौक है इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है, कहीं भी बना दो, right? You need land in urban centers which is very well connected to the educated population, right? So you don't need land here and there जो हम experiments करते रहते हैं, फिर हम उनको breaks देते हैं and then we kind of see अच्छा इसमें से miracle निकलेगा. You need land, affordable land in urban centers or closer to urban centers जहाँ पे आप मेरे जैसे और पढ़े लिखे लोग या बाकी जो labor class है, they can easily go, they can do their work, they can come back, right? So अब ये कहाँ से आएगा? ये कहाँ से आएगा? This is a very important question, right? अब हमें ये पता है, let's say आप assume कर लो कि हमें ABC सेक्टर बहुत अच्छे हैं, उसकी तरफ हमें रिसोर्सेज लेके जानी है. फाइनेंस हमें बैंकों का जो डायरेक्शन उस तरफ हमने शिफ्ट करनी है, इन्वेस्टर की डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट करनी है, लैंड हमने उस तरफ एलोकेट करना है, लेबर को हमने उस तरफ डायरेक्ट करना है. आपने पकड़ के तो नहीं करना ना, और कहीं पे ये चीज़ें पड़ी नहीं हुई. दीज आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड. कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, पैसा लैंड आपका रियल एस्टेट, DHS, बैरिया शहरिया इनमें लगा हुआ है. बैंकर्स जो हैं वो जो सेट्स हैं उनको फंड करते हैं, गवर्नमेंट को फंड करते हैं. अब आप मुझे फंडामेंटल क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताओ, ये कौन करने देगा? क्या DHS, रियल ये हाउसिंग सोसाइटीज, बैरियाज,
या अब तो एयरपोर्ट कहीं पे बनता है तो हाउसिंग सोसाइटीज वहाँ पे ऐसे निकलती है जिस तरह यही हमें काम आता है। ये जिन जिन लोगों के इन सेक्टर्स के साथ मफाद जुड़े हुए हैं और उनकी इससे चल रही है, आपको लगता है कि वो कहेंगे कि नहीं, हमने जो इस तरह की स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसको आप चलें टैक्स कर लें ताकि इस तरफ इन्वेस्टमेंट कम आए और आपकी जो लैंड प्राइसेस हैं वो स्पीड से ना बढ़े, ताकि जो प्रोडक्टिव सेक्टर है उनके लिए अफोर्डेबल हो। लेट्स से लैंड बाय करना, या लेट्स से आपने रेंट करनी है अगर कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, तो आप रेंट कर लो। या लेट्स से वेजेस आपकी आर्टिफिशियली इतनी ना इंक्रीज हो, सब्सिडीज या ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से, या डी के आपकी जो लेबर फोर्स है वो यहाँ एग्रीकल्चर से निकल के कंस्ट्रक्शन में चली जाए, राइट? कंस्ट्रक्शन अगेन इज क्वाइट अनप्रोडक्टिव, वहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। तो who's going to let that happen? And that's very important कि हम ये तो कहते हैं जब हमारे मिनिस्टर्स भी हैं कि आईटी को हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, फलां सेक्टर में हमारी बड़ी पोटेंशियल है, हम उसको 100 बिलियन पे एक्सपोर्ट चली जाएगी, फलां की 20 पे चली जाएगी। लेट्स से मैं मान लेता हूँ सारी आपकी बात कि वो जो आप सेक्टर्स कह रहे हो उनमें बहुत पोटेंशियल है, और उसकी एक्सपोर्ट में ये भी मान लेता हूँ कि आप लेट्स से 0 से 100 बिलियन पे जा सकती है, फर्क कर लो। वो 0 से 100 बिलियन तक जाने के लिए जो रिसोर्सेज आपको चाहिए और जिन सेक्टर्स में और जिन वेस्टेड इंटरेस्ट में, जिस अशराफिया के इंटरेस्ट में वो रिसोर्सेज इस वक्त काम कर रहे हैं, क्या वो आपको मूव करने देंगे वो रिसोर्सेज वहां से? बट देन इसमें मेरा आपका काउंटर क्वेश्चन होगा आपसे कि क्या ये पाकिस्तान में वाहिद ऐसी अशराफिया है जो कि रेंट सीकर हैं जो कि एग्जिस्ट करते थे, या दुनिया भर में पर्टिकुलरली एशिया में पिछले 30 सालों में जहाँ जहाँ पे इकोनॉमीज खुली हैं, आपने बांग्लादेश इंडिया की एग्जांपल दिया, आपने चाइना की एग्जांपल दिया, आपने इंडोनेशिया हम रिसेंटली देखते आ रहे हैं कि यार उनका बड़ा सिमिलर वो था पाकिस्तान के। मेरे लिए आई वुड प्रॉब्ली वांट टू स्टडी दैट, राइट? बिकॉज दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल बिहेवियर कि अगर मैं लेट्स अज्यूम कि मैं जो है ना वो यूट्यूब का बादशाह हूँ और मेरे पास जो है जी यूट्यूब से फ्री डॉलर आता है और मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं जितना भी अच्छा हो जाऊँ ना, जिस दिन अगर यूट्यूब को हिट पड़ने लगेगी तो मैं अच्छे से अच्छा आदमी भी कहूंगा कि यार कोई मेरे लिए गुंजाइश नहीं निकाल सकती, आप अपना जो करना है कर ले, बस मेरे लिए गुंजाइश निकाल दे, राइट? सो दिस नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि जिसका जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम को चलाता रहेगा। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि either then potentially यहाँ पर creative destruction important होती है, where the economy at a certain point begins to realize कि listen, I mean what is unsustainable is unsustainable, so I'm gonna now punish all of you, right? And वो punishment की अंदर से फिर eventually value निकलती है। So then potentially मुझे एक चीज़ तो ये नज़र आती है कि यार अगर ठीक है lack of ये नहीं करने देंगे, मान लिया ये नहीं करने देंगे, but then the only outcome from that I see is crash. I don't see a lag. I don't see कि अच्छा हम बस ज़्यादा grow नहीं कर सकेंगे. I see a crash because in the absence of value-driven, high-efficiency direction, you're basically going towards a spiral that is eventually one way or the other in a country जहाँ 25 करोड़ लोग हैं, आबादी बढ़ती रहती है, आपने crash करना है. And from the ashes of that crash will basically a new economy rise. Otherwise आपको या तो वही है कि आप stakeholders को बिठाएं और उनसे कहें कि भाई या तो crash कर लो या let go. ये इसमें अब दो फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं ना, आई मीन, सो इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट? हाउ डू यू शिफ्ट द रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द पीपल और द एलिट्स और द सेक्टर्स which have vested interests and they are very much entrenched as well in the system, right? So that's the fundamental question, right? चाहे वो real estate हो या let's say low productivity agriculture, for example, आपने sugar की बात की वगैरह वगैरह, all that comes into play. So there are two ways to think about this. One, और दोनों पाकिस्तान में डिस्कस हो रहे हैं और होते भी हैं डिपेंडिंग ऑन हु यू आर एंड वेयर यू आर. One is which is, I'll put this in a slightly international context ताकि पाकिस्तान से हम जरा दूरी रहें. फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमारे जो गवर्नमेंट ने एडवाइजर ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर हैं स्टीफन डर्कन, राइट? So I was talking to him, I met him in Oxford. So what is his model or what is his thesis? So his thesis is, okay, fine, things are going to crash, this system is unsustainable, you know it, you said it, numbers are showing the same, you get growth अगर आपको कहीं से geopolitical events आ जाए, कोई मेहरबान हो जाए, या you get lucky with a shock here and there, तब तक चीजें चलती हैं, जैसे ही वो बंद होता है तो आप you choke, right? So what's the way out? Either you let the system choke and see what happens, or his thesis is कि नहीं, जो अशराफिया है, they come sit together around the table and they come up with some kind of an elite bargain. Now, this is one way to think about the solution, right? And this is
a solution which I think जो Shafi है उसको बहुत पसंद भी आता है क्योंकि ball stays in their court and it's up to them to design a new system as per their wishes, desires, and so on, right? So that could be one way to think about it. Like, I'm just trying to give a framework here, and then people can decide on what they think is better. Just to The understand, other, because I like yeah, I like data to guide me. Has there been similar grand bargains in other countries where turnarounds have happened? okay. So in his book, so the book he's written, I think he kind of tries to provide some evidence of that being the case. I'm not too convinced looking at the case studies that he offers. I mean, those are things either go wrong soon enough, or also there's a fundamental question, which is, but let me come to that later. Okay. Let me give you the other framework, and then we can kind of see the pros and cons of the two. The other framework is more along the lines of Acemoglu, Robinson, जिन्होंने book लिखी, Why Nations Fail, and then more recently there's also another book which is quite famous in terms of, I think, power and progress. It's a pretty nice book. What's their framework? Their framework is more bottom up. So the mechanism is this: something is not working. You want the resources to move. You need some mechanism to make that happen. In Durkin's case, the mechanism is going to be elites sitting together and being wise and deciding on that. In Acemoglu and Robinson's case, it's going to be the masses protesting on the street and democratically exerting the pressure on the decision makers through a vote and making them decide or to take a different path, right? So this is a bottom-up approach where it's a democratic process in some way. The street or the voter makes the person at the top listen to them that we are going to vote you out or whatever if you keep on following the policies which are failing to deliver. This does not mean that the masses of the individual who's voting is very wise and knows about the system, how it works, but they are wise enough to see that this is not working. Right. So without giving examples, the voter knows when things are being run in an irresponsible manner, right? Either उसकी जिंदगी बेहतर हो रही है और अगर नहीं हो रही तो वो प्रोटेस्ट करेगा. It's very sort of, मैं इसको बाइनरी में लेकर आ सकता हूँ. It's very simple, right? I mean, yeah. So I think generally, so I don't want to get into it given the politics of it, but I think Pakistani voter is very wise. Right. It's why very forward-looking as well. So this example I really like. So I take the liberty of hopefully no one will mind it. So for example, think about the PTI government, right? In KP. So PTI government, they had a very good policy of health insurance. Right. Now, the policy wasn't going anywhere. The government had expanded it in the previous Jo bhi pichli government thi. But then think about the local government before all this vote of no confidence happened. The policy was already there, but people ended up voting in a different direction come the first round of the local government election. Right. Do they not like the health insurance? They do, because when it was taken away later, they complained and they actually protested. Some of them even voted based on that this was taken away from them. But when it was there, they were asking for more, right? They were saying, what next? Show us a better future than what is already there. Let's move on. We're not going to be slave of a good policy that you've implemented. Thank you for that, but you were elected for that, right? So in many aspects, likewise, BISP and all those things. So people have been forward-looking. They're not tied to someone to the grave. And in a broader framework, you can pick exceptions here and there. But generally, I think the masses in general have been quite forward-looking, and then they know what works, what doesn't work, and they punish the policymaker or the politician when they don't promise a better future given what they already have. But leaving that aside, it's a very good example because people really tend to underappreciate how intelligent our average common person is, more than the intellectuals like us on the shows. And I do trust their judgment on these kind of things. But that's one way. So these are the two frameworks which you have. And then the question is, which of these two frameworks is better? I'm personally more inclined with the second framework. I do entertain the possibility that both can work. You can have go back to, let's say, UK's history, right? So you have a new elite which takes over, who were traders. They replaced the feudals, and their interests were very different. They were more trade-oriented, open, go and capture the market. There was a very shadowy side to it in terms of colonialism.
but it was more about expanding the networks, getting their products out there so they can scale up and get the profits and get the innovation going. Obviously, at our expense, right? South Asia and other countries that suffered. But the elites, you can get lucky that you end up with elites whose interests somehow align with the country as a whole, right? But that's an exception. You can just wait for some elites to take charge somehow because of some historical accidents and then take the country in a direction where their interests match that of the country, right? So it's a very kind of, okay, fine, let's see what happens. And interest in the 21st century, I think it's also very problematic because things change very rapidly. Even if the elites, they sit together and let's say they agree to the best way forward. 10 years down the line, that way forward will be completely redundant. Given how fast the changes are happening. We don't know what the production is going to look like, what will be the role of AI, robotics, where the agriculture is going to be, what the climate change is going to look like, right? The world is changing so fast, both in terms of technology and the vulnerabilities that are building around us. You cannot rely on, let's say, someone reaching a consensus, and then we are now stuck in a new equilibrium which cannot change until the elites are forced, let's say, 50 years down the road to sit again and think about a new path forward, which maybe is right, giving them that luxury, which I don't believe in. So there's that. Or you have a more flexible system, which is democratic in nature and which responds in a much quicker way. It has its downside, but it's a lot more flexible to what's going on in the world and around you to push the policymakers to make or to change the policy choices they have been making before. So there are these two systems. But then at the same time, in the two systems, again, I think it's important to talk about the military here, which is a very important factor which makes the system very uncertain. Right. You don't let the voter to decide, let me kick out this policy and bring in new sets of people with new sets of policies. You don't even let them, you are not giving them that opportunity to get the process going. Right. If you're not going to give them this opportunity and you're going to keep on intervening 2 years down the road, because obviously military in Pakistan has very significant business interests. They are in real estate, they are in food, they are in fertilizer, they are in all the sectors where the protection is very high. So they are also a very important player, not just political or let's say quasi-political, but also business or economic player in the whole scheme of things, the way they are being played. So I think that's also something which needs to be addressed somehow, that you adopt a system, move toward a system which is more continuous, so that the policies can then be changed either by the policymakers as they realize or through the public pressure which comes in the terms of in the face of failed policies. Makes sense. And this is even though Dr. Asia does not put it in this way, but I think his contention of the system being too disruptive, I think is pointing in the same direction, that you're not letting the governments to stay for long enough where they have a bit of a longer horizon, even when they're thinking about whether to spend the reserves or build up the reserves or just to give them away to stimulate consumption and get some temporary growth so they can come back in power. So I think that disruptive political system that we have, or quasi-political system that we have, that is, I think, also at the root of what we have going on with the repeated balance of payment crisis. Makes sense. एक तो ये कि जो डॉक्टर इशरत की book है, do you have it lying around somewhere? If we can show it so that the viewer can like. I do actually. So just show it in the camera. थोड़ा सा ऊपर कर लें. So it's called Development Pathways. So ये book जो है basically, if I'm not wrong, 2022 तक इसमें इन्होंने cover किया हुआ है. ये institution reforms की बात करती है. What does it talk about? So I've only read the first 3 chapters so far, which are more about the development path the 3 countries have taken: India, Bangladesh, Pakistan. It's very brief. जो मैंने chapters पढ़े, they obviously abstract from a lot of other important things which even I think are important. But it kind of gives you a bit of a very quick overview of what was the path, broadly speaking. And then I think in the follow-up parts, it gets into the data. There are co-authors as well. People can see over here, Right. Dr. Ishrat. So they have written the other chapters in the book, I guess, or everyone has contributed. So I still haven't read it, so I can't say what's there, but I think it's a bit more on the data side. Makes sense. इसमें अभी आपने बिल्कुल I'm going to wrap this up, but I just wanted to ask you
2-3 आपने इसमें बातें की थी कि आपने कहा था कि देयर इज़ आइदर अ टॉप डाउन और अ बॉटम अप sort of formula for change. और दूसरा आपने इसके अंदर अभी towards the end you alluded to the military, which itself is not just a political player or geopolitical player for Pakistan, it's also a economic player. और वो जो है वो इस तरह के similar plays हमने again दूसरी countries में भी देखे हुए हैं। जिसमें मैं पर्टिकुलरली हमेशा एग्जांपल जो मुझे मेरी फेवरेट एग्जांपल है वो इंडोनेशिया की है, जहाँ पर एक मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ सॉर्ट्स थी। मिलिट्री बहुत हेविली इंट्रेंच्ड थी उनके इकोनॉमिक सिस्टम में, उनके इदारों में, उनकी सारी चीज़ों के अंदर। um, ज़ाहिर है जब हम मिलिट्री की बात करते हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ा इदारा है। इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी डिसिप्लिन्ड। उसके ऊपर आप जो है वो ज़ाहिर है कि आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार वो अच्छा है या बुरा है या जो भी है, बट अगर हम इस अजम्पशन से चलें कि यार बेहतरीन लोग हैं, सब बेहतरीन काम कर रहे हैं, बट उनका वो काम नहीं है। सो वो इनएफिशिएंसीज़ अगेन जब इतना बड़ा प्लेयर एक आकर बैठेगा, और जो आप पहली बात कर रहे थे कि हाउ डू यू गेट अ स्टेक होल्डर टू एग्री टू द आइडिया कि लिसन, you might have to do things differently now, right? What you're doing is inefficient, and now you'll have to take some losses. You'll have to evolve yourself. तो वो more often than not जब एक institution की शक्ल में कोई चीज़ आती है तो वो तो बिल्कुल ही उसको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। And so in that context, I'm trying to understand the inevitability of change। अगर मैं आपसे पूछूं आपको किस हद तक लगती है? क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग में मुझे पर्सनली लगता है कि we're now at a point where you can't really argue on the inevitability of change. You can potentially begin to understand कि वो change कहाँ से आएगा, क्या हम ground up लेकर आएंगे या वो top down लाना पड़ेगा। But and one of the reasons why I feel like कि वो जो change है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है is because I feel like there's a lot of denial, whether that is your rent seeking class, whether that's someone कि वो constantly पिछले 2-3 सालों से ना वो कहीं कहीं ना कहीं उनकी एक लिस्ट है कि यार अगर ये हो जाएगा तो सब सेट हो जाएगा, नहीं नहीं अब ये हो जाएगा तो सब सेट हो जाएगा। एंड दोज assumptions आर द रीजन वाई जो हमारे क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस आ रहे हैं, बिकॉज वो हम उस assumption को प्ले करते हैं और फिर रियलाइजेशन होती है कि अच्छा ये भी काम नहीं की, फिर हम अगले पे जाते हैं और हम अगले पे जाते हैं, और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक टेम्परेचर एंड एक जो केओस की फीलिंग है, मैं नहीं कह रहा केओस ग्राउंड पे आया है, बट केओस की जो फीलिंग है वो बढ़ती जा रही है, बिकॉज यूर लाइक वेट, सो दिस डिडंट वर्क एंड दिस डिडंट वर्क एंड दिस डिडंट वर्क। एंड सो अगर आप इस इन 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 पॉइंटर्स को देख रहे हैं ना, तो आपको एक बिल्डअप नजर आ रहा है जो कि वो एक ही उसका आउटकम है कि वो वन वे और दी अदर, या तो लोग कहते हैं ना क्राइसिस आ जाएगा, तबाही मच जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे। मेरे लिए वो हालात की खराबी इज ग्राउंड अप चेंज, राइट? या आप कहते हैं कि यार नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, फाइनली जो है आप कोई नई पॉलिसी स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसपे चेंज आ जाएगा, तो दैट्स ग्राउंड अप चेंज, दैट्स टॉप डाउन चेंज, राइट? बट द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड द करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान कैन नो लॉन्गर सस्टेन, लाइक जो है ना कि किक द कैन डाउन द रोड नहीं हो सकता, लैक ऑफ ग्रोथ नहीं हो सकती। यू गॉट अ ह्यूज पॉपुलेशन who is now empowered and educated enough to know that they don't want to live in the same way that they've lived, or their forefathers have lived. And so again मैं इसको थोड़ा सा वापस कूजे में बंद करता हूँ। Do you think that अगर मैं आपसे पूछूं कि do you would you believe in the inevitability of change now at this point in time in modern Pakistan, irrespective of के यार चलें आपका एक ओपिनियन है कि किस तरह से हो सकता है, किसी और कोई और ओपिनियन है? Yeah, I mean, it's very hard to predict change, honestly. So, um, if you look at the history, countries destroyed themselves because people didn't want to give up, right? So people at the top didn't want to give up, right? So giving up is not that straightforward, right? So the first instinct, अगर इतना आसान होता तो एलिट्स पे बैठ के खुद ही डिस्कस क्यों ना कर लेते कि यार अच्छा ये पाथ बेहतर है अभी वाले पाथ से, तो लेट्स मूव ऑन टू अ डिफरेंट पाथ एंड hope get the size of the pie to be bigger, which we can share both with us and everyone else, right? But that's not really what we see in reality. But So then I mean, I'm not necessarily saying that it's going to be easy. All I'm saying, इसलिए the statement that I used was the inevitability of change. Change काफी दफा deadly भी हो जाता है. Change काफी दफा जो है वो difficult भी हो जाता है. मेरा again what I'm trying to hypothesize is that business as usual नहीं चल सकता. One way or the other, either you let go of that power and you agree to change and do it in a way that sustains the stability of the system, sustains the stability of the nation, or the alternate is कि लोग जो हैं वो chaos की तरफ जाएंगे one way or the other, चाहे वो rebellion हो, revolution हो, जो भी हो, you will see some form of change because there is a growing resentment amongst the population. I think scenarios
scenarios create karte hain, right? So what are the three possible ways forward? It's easy then to predict on what's going to happen. Right. So one is what you're saying. So something which will be very chaotic, let's say, if not revolutionary, then at least bloody, or let's say something which is extremely, say, suppose that a persecution hogi, right? Right. So if things go the way they are currently going, right, meaning elites, they don't decide to give up on power and share it more equally with, let's say, the growing population, the educated segment of the society, and even the political players, then I think we are going to go in that direction. And it's not just the educated segment of the society. I think that's again a bit more of the kind of जो आपकी Pakistan wasn't literacy बहुत ज़्यादा नहीं थी बांग्लादेश में or the former East Pakistan. Balochistan, it's not that they are very educated in terms of the numbers, right? I'm talking about the formal education. I think the common person is more intelligent than perhaps many educated. But likewise, in KP or in the Pashtun belt, in AJK, in GB. So you have all these segments, different parts of the country, either in the past, which were part of the country, and today, which are part of the country, which are not highly educated, but they do need that power sharing. Right. They need political voice. They need representation, right? ये जो idea है ना हमारे mind में कि गवादत बन जाएगा और economic development हो जाएगी and people will say, okay, fine, we are happy to live with that. It's not that straightforward. In China, people have a very high degree of trust in the government. It's a very different ball game. Pakistan is a very ethnically diverse country, so everyone needs some kind of representation to express their identity, whether that's religious or ethnic in nature or whatever, nationalistic, whatever that is. So that friction is already there. If things go the way they are currently going, I think, and no one, either the economy doesn't improve, meaning we don't get lucky with geopolitical rents, elites, they don't give up on power. When I say give up on power, I mean in a way which is broadly shared with, let's say, the people or the political or the ethnic groups or the nationalities, religious groups across Pakistan. Then clearly we are going to go towards what you were saying. It's going to be anarchy, or it's going to be an environment where people are just going to be better off leaving because you won't be able to speak up. And if you speak up, you'll be persecuted, or like what's happening more recently, your family members will get persecuted if you happen to be further away, right? That's one scenario. That's the status quo if we say the current situation is going to carry on like this. The second is a bit better, which is we'll get lucky, and then another round of geopolitical rents will show up from somewhere. Some accident will happen, like no one could predict, let's say 9/11, right? 9/11 happened. We got major restructuring from the Paris Club. Our debt got extended, profile 10 saal ke liye extend ho gayi. And more than that, it wasn't a very good period in terms of the structure of the economy. Aapki investment rate gira hai, aapki exports to GDP ratio gira rahi hai. So people from Musharraf era say, padani, it was a very excellent state of the world, but aapki debt sara restructure ho gaya 10 to 15 years. So those pressures were gone all of a sudden. The next morning you wake up and that's not there. The global economy was booming, right? So your exports are doing very well. Remittances are getting picked up. Obviously, there was some reform done as well in the early days. जो आपकी banking sector privatized हुआ, telecom आया. So there was a lot of that happening. So credit where it's due. But overall, the macro indicators in terms of जो चीज़ें matter करती हैं, investment rate के साथ क्या हो रहा है, export competitiveness के साथ क्या हो रहा है, all of those things were going downhill, right? The productivity numbers which I worked out in the paper, which I with my other co-authors together, they are pretty low, and they are also for the period when Musharraf Saab was in power, right? So, but you got that massive relief. Then you also ended up getting some inflows. They're not as big as, let's say, the US wants to pretend, but then still they were big enough to make a dent on your financials. Then also you ended up getting the remittances also started to pick up. So all those things got together, and then they gave you a bit of a space when you can kick the can down the road for long enough until the crisis emerges again. That's one way to run the country, which is what we have been doing forever. Things shit hits the fan, excuse my language, and then we wait for us getting lucky. And then at some point, if we wait for long enough, we may get lucky, and often in the past we have gotten lucky, and that gives us another 10 years, and then we kind of repeat the cycle, right? What is it that the government is currently, so over the last 2 years, what's the thing that the policymakers have been looking up to? What they have been looking up to is getting lucky.
हुँ, जीसीसी से 80 बिलियन आ जाएगा, हुँ, दैट केम डाउन टू 20 बिलियन आ जाएगा, दैट केम डाउन टू 5 बिलियन आ जाएगा, 2 बिलियन आ जाएगा, अब 101 मिलियन जो यूएस ने एड अप्रूव की है या कर रहे हैं, अब उस पर बात आ गई है. व्हाट्स द कोर? इट्स नॉट अबाउट कि 100 से 100 मिलियन पे आ गया. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट you have been looking for someone else to come from the outside to bail you out so you can keep the whole thing going for another 5-10 years, and then we'll see what happens, right? So right, that's the approach that's been embedded in the policy making circles um, ever since we came into play, and that is also what we see today, right? right, As far as reforms are concerned, we don't see much happening there. There's nothing happening on trade front कि आपने market access लेनी है या आपने कोई अपने आप को expand करना है. There's nothing on, let's say, improving your governance structures. हम exports की बात करते हैं, but there are studies which show कि half of what you end up exporting depends on the quality of your contracting institutions. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं अबाइड होगा, इवन एज अ फ्रीलांसर, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं अबाइड होगा तो हाउ कैन यू डू फ्रीलांसिंग? आपको अगला बंदा पैसे ही ना दे फिर, हुँ, right? तो कहीं ना कहीं तो आपका contract, there are enough legal structures to make this whole freelancing thing to work in the world, right? So you have to have those legal structures in place which are credible enough for people to invest, not worry about कि अच्छा मुझे नहीं पता कल क्या होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी या पार्टी चेंज होगी या कोई और बंदा आ गया या मैं मुल्क से बाहर गया तो पता नहीं मेरे बिजनेस के साथ क्या हो जाएगा, right? So those contracting institutions, in addition to market size, are super important if you are to start producing more high value added goods. जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोडक्शन प्रोसेस, उतनी ज्यादा आपको कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स चाहिए, राइट? किसी से आपने आईपी खरीदना है, किसी से आपने कोई पार्ट खरीदना है, किसी से आपने सर्विस एग्रीमेंट साइन करना है, किसी से आपने कस्टमर साइड पे सेल्स रेप्स आपने साइन करना है. सो द मोर कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स, द प्रोडक्शन बिकम्स, द मोर demanding the legal process becomes. So until and unless you have that in place, it's not going to happen. So none of that is happening. Coming back to my point, the mindset is embedded over the last 50, 70 years to whenever things go bad, look outside in the hope that someone will bail us out, right? So that's the second part, which is something which has worked over the last 70 years. So maybe it can keep working. I don't know. I don't know. Like how you can't predict being lucky or something going wrong in the region and then you siding on one side and that getting you a lot of the room to play with. It's a bit tricky because Pakistan's debt today is much more complex. पहले सिर्फ पहले पेरिस क्लब को आपने वापस करना था, आज जीसीसी को भी करना है, चाइना को भी करना है, पेरिस क्लब को भी करना है. So it's very difficult for an event to happen which brings all of them to your table, right? right. So it's not as straightforward. So But very nonetheless, who knows? Maybe you can get lucky. And no, then the last thing is essentially the first option is that you do go towards the elites do step back and they share the power in a political way, which is compatible with the constitution, which brings in everyone into the national fold and make them feel as being part of the country, because only then you can start thinking about contributing to the society and building your future in the country, right? If you don't feel that you are being represented by the country, if your identity is being attacked through one way or the other, whether that's political identity, religious identity, ethnic identity, you don't want to build your future in the country, right? You'll find another place somewhere else. I'm not saying everyone does that, but I'm just saying that spirit kind of takes a big hit. So you have to give that room in the modern 21st century world where people have the freedom and the freedom to express themselves in every way possible, keeping obviously within the ambit of whatever the country represents in terms of norms and values. It's depending on which country you are, it's different. So whatever that is, but then the key thing is you have to have that freedom, that power sharing agreement, which makes people feel part of the community so they can then start thinking about the future rather than what's going to happen tomorrow or how they can leave the country at the very next minute. Makes sense. Ahmed bhai, I'm going to wrap this up. Thank you so much for the insight. 45 minutes से कहा था, 1 घंटा 50 मिनट यहाँ आपको आपके हमने ले लिए. Thank you for taking out the time and sharing all that insight. Thank you very much. It was good to, or the pleasure to be here. चैलेंज जबरदस्त. एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पाकिस्तान's चेंजिंग डायनामिक. डू यू थिंक कि फाइनली एलीट जो है वो लेट गो करने के मूड में है, या डू यू थिंक कि जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा? साथ ही मुझे जरूर बताइएगा व्हाट आर योर थॉट्स ऑन डिफॉल्ट. क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहिए? क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जब डिफॉल्ट नहीं,
जब रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो मुल्क कैसा हो जाता है, क्या पोटेंशियल उसके फ़वाइद हैं या नुकसानात हैं? आई वुड लव टू know your thoughts. But anyways, this was Sayyid Muzamil Hassan Zedi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.